Hello everyone. This year, LevelUp IAS has decided to put all our prelims economy videos of PMP program on YouTube to be available for everyone. The PDF notes for the same is also available in the Telegram channel given in the description. These videos takes care of all the basics requirement plus PYQ discussions. If the response for these videos are good, we also plan to come up with current affairs, economic survey of India and budget session in a very concise manner for preliminary examination in the coming days on YouTube only. I hope you enjoy this video and level up your chances of getting selected in this year's preliminary examination. Thank you very much. Now let us come to economy. अब economy में there are 6 fundamental areas that I want to focus upon. Generally, around 70% of the questions, 70-75% of the questions come from these fundamental areas. 20-25% of the questions will come from current affairs, economic survey of India, budget, जो वो चीजें चल रही हैं डायनेमिक वाली, but 70-75% of the questions would be from these basic areas, these 6 basic areas that I want to emphasize on in these 9 classes. पहला है that the booklet that you've got today, that is on national income. Then we have inflation. Third is budget and fiscal policy. Fourth is money supply. Monetary policy. And इसी में banking, RBI banking, all those stuff. This fourth point is like the number of questions from this is equivalent to what you have from the first 3 points. So fourth is the biggest one. It is also the section which is going to take a lot of time for us. Then we have capital market. Recently, UPSC has started asking one question every year from capital market. Otherwise, capital market did not used to be that important. And finally, we have external sector. In external sector, we deal with balance of payment, we deal with exchange rate, we deal with other such issues. ये 6 broad areas हैं, which I primarily want to emphasize. Then there are छोटे-छोटे कुछ areas हम cover करेंगे, जैसे employment, Now, there are some other things that needs to be covered in our economy का preparation, जैसे agriculture. और infrastructure. रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, पोर्ट्स, इन चीजों पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं थोड़े बहुत, राइट? वी हैव सीन लास्ट ईयर ही कुछ पोर्ट्स पे क्वेश्चन थे वैसे जो, बट दे आर वेरी डायनेमिक इन नेचर, है ना? तो ये थोड़ा सा बात, इसीलिए वी आल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ यू पीपल जॉइनिंग द टारगेट प्रीलिम्स क्लास, सो दैट यहाँ पे the basic part along with all its current affairs. Please understand, we'll be covering current affairs of all these things. When we are covering national income, आप देखोगे national income में I have ensured you have all the current updates. ऐसे when I cover banking, all the current updates would be there. So we are doing all the current updates here also, but those portions which are only dynamic, which are only current affairs things, that will be part of the target prelims part. That would happen with you. That will be you will be doing only after 5th of April. 5th of April तक आपको टारगेट प्रीलिम्स में कोई क्लासेस नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल कोर्स को फॉलो करोगे. उसके बाद व्हाटएवर मे बी लेफ्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स पार्ट, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जब तक नहीं आता, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कवरिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर. अब बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया विल बी कमिंग ऑन 31st December, 1st of Feb. उस टाइम तक हमारी इकोनॉमी क्लासेस खत्म हो गई है. तो वन ऑप्शन आई हैड वाज आई कीप सम इकोनॉमी क्लासेस इन अप्रैल आल्सो. देन आप लोगों का अजम्पशन होता है कि दिस इज अ वेरी लेंथी कोर्स,
दिस इज अ कोर्स जो टाइमली कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो एंड दैट इज व्हाई वी हैव kept it out. Last year I had done this. Last year मैंने PMP बैच में ही क्या कर दिया था कि I'll keep covering everything. I kept on taking classes till April end. But then एक रिव्यू जाता है कि this course is what? This course is very long. So we wanted to avoid that, and that's why we reduced the fee in second batch, and we gave an option to students कि आप को अगर अपडेट्स चाहिए, जैसे पॉलिटी में आपके बेसिक क्लासेस हो गए होंगे, कुछ करंट अपडेट्स हुआ होगा, बट उसके अलावा भी इफ यू वांट टू डिपेंड ऑन लेवल अप कंप्लीटली फॉर एवरीथिंग, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ जॉइनिंग टारगेट प्रीलिम्स पोर्शन आल्सो, वेयर विल बी कवरिंग ऑल द अपडेट्स दैट मे कम. तो मैं इकोनॉमी पढ़ा के चला जाऊंगा, उसके बाद भी जो अपडेट हो रहे हैं, निखिल सर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा के चले जाएंगे, उसके बाद भी न्यूज में कुछ आ रहा है. अब पॉलिटी टीचर पॉलिटी चला के पढ़ा गया, उसके बाद भी चीजें चल रही है न्यूज में विच मे बी इंपॉर्टेंट. साइंस टेक टीचर, देखो आई एम आल्सो द करंट अफेयर्स टीचर, तो आई विल बी टीचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी करंट अफेयर्स टू. बट आपका साइंस टेक जनवरी एंड में, फरवरी फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आई डोंट हैव साइंस एंड टेक क्लासेस एलोकेटेड. तो हाउ डू आई इंश्योर कि जैन फेब मार्च अप्रैल का भी मैं साइंस टेक का करंट अफेयर्स अपडेट कर दूं? तो उसके लिए वी हैव गिवन यू एन ऑप्शन कि आप टारगेट प्रीलिम्स क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो. फॉर बैच वन में हमने फीस थोड़ी ज्यादा रखी थी, तो वी हैव इंक्लूडेड टारगेट प्रीलिम्स क्लासेस इन दैट ओनली. फॉर बैच 2 वी हैव एन ऑप्शन ऑफ choosing it, like it depends on you what you want to do. You want to follow your own current affairs mechanism, you want to stick with us and do it with us, उसके लिए वो ऑप्शन अवेलेबल है. ओके, तो these are the 6 major areas. एम्प्लॉयमेंट छोटा सा है, हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाता है, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग इट एज अ मेजर एरिया, बट दीज आर द 6 मेजर एरियाज दैट वी हैव टू फोकस ऑन इन द कमिंग क्लासेस. इससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज, इससे रिलेटेड सारा करंट अपडेट्स इज समथिंग दैट विल डू इन द नेक्स्ट 9 क्लासेस दैट वी आर डूइंग, और अराउंड 40 आवर्स दैट विल बी गेटिंग. रोज 5 घंटे नहीं होता है, क्योंकि हाफ एन आवर ब्रेक भी होगा, तो 4.5 hours will be getting, to roughly 40 hours is what we have for covering this portion. And please understand, I'm again repeating, each and every update related to it is also being done in these classes here. Okay, now let us start. कोई doubts है before I go ahead? नहीं, किसी को कोई doubts नहीं है, कोई concerns नहीं है? गर्मी लग रही है? नहीं, गर्मी लगे तो जैकेट उतार लेना, है ना? उसके बाद भी नहीं होगा तो I'll get the doors closed and I'll get the AC switched on. AC switch on मैं नहीं करवाना चाहता, सर्दियों में AC चला के बैठे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है. That's why I've got all the doors open so that we don't feel suffocated and हमें गर्मी भी ना लग रही हो. बट अगर गर्मी लगती है तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपने वुलन्स हटाएंगे, उसके बाद we'll move on to the option of switching on the AC. 1-2 महीने, दिसंबर जनवरी आर द 2 months जहां हमें AC नहीं चलाना पड़ता है. Let's try to do that. बाकी फरवरी से तो we'll again have to depend on AC only, because in these number of students it will be quite hot, quite warm in the classroom. Okay, so let us start with the first. Batch 1 वाले students के लिए already included. जैसे अप्रैल में मैं ऑफलाइन क्लासेस लूंगा तो आ जाना, है ना? हाँ, नहीं ऑनलाइन नहीं, आपको क्लासेस करनी नहीं है टारगेट प्रीलिम्स की अप्रैल से पहले. प्लीज अंडरस्टैंड, नन ऑफ यू हैव टू डू टारगेट प्रीलिम्स क्लासेस टिल अप्रैल. प्लीज समझिए, टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, उसमें 10th जनवरी को मैं साइंस टेक पढ़ाना शुरू करूंगा. ठीक है, अब आप सोचोगे सर मुझे वो पढ़ना नहीं है क्या? अरे मैं साइंस टेक यहां भी तो पढ़ाऊंगा ना आपको. आई विल फिनिश ऑल दोस थिंग्स हियर. मेरी कोशिश क्या है? I'll be covering all the current affairs with you people. It's only after your course gets over. जो मैं वहां पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर्स बैच में पढ़ाऊंगा, मैं यहां भी पढ़ा रहा हूं. I'll be doing science tech there, I'll be completing science tech here, same notes with all current updates. I'll be doing environment there, I'll be doing environment here also, same notes with all the current updates. मैंने क्या बोला? जब क्लासेस खत्म हो जाती, मेरी जनवरी में टारगेट प्रीलिम्स में भी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, बट देयर आई हैव नॉट सेड कि मार्च एंड में आपकी क्लास कंप्लीट हो रही है. I have told them कि आपकी क्लासेस चलती रहेंगी बाद में भी, because more current affairs update would come and I'll keep taking those classes. But for you, we have to finish classes by whatever date is there. तो मेरे को और साइंस टेक की क्लासेस नहीं मिल रही हैं. तो for that we have an option of you people. If you people are like नहीं, हमें लेवल अप पसंद आया, लेवल अप पे रिलाई करना है, हमें इधर उधर नहीं भागना है, तो do that, stick to that. Okay, got it? Now let's come to this. देखो अब यहाँ पे आप प्रीलिम्स सिलेबस देखोगे ना, बड़ा ही वियर्ड सा दिया हुआ है, इसमें से आता कुछ है.
सोशल इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। अब ये क्या है, ये स्कीम्स रिलेटेड चीजें बता रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम इन, यहाँ पे दे हैव नॉट मेंशन्ड बैंकिंग, दे हैव नॉट मेंशन्ड मनी सप्लाई, दे हैव नॉट मेंशन्ड फिस्कल पॉलिसीज, बट क्वेश्चन तो उस पे आ रहे हैं ना। दे हैव नॉट मेंशन्ड एक्सटर्नल सेक्टर, दे हैव नॉट मेंशन्ड, तो ये सिलेबस जो है इकोनॉमी का बकवास से छोड़ दो। हमें बेस्ड ऑन PYQ वी हैव डिजाइन्ड अ प्लान ऑन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्लासेस एंड विल बी फोकसिंग ऑन दैट। ये पढ़ने के लिए तो मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ लेना होता है एंड हो गया है। ओके, if we want to understand the significance of economy, we'll see that every year more than 15 questions, 15 to 20 questions economy से आते हैं। तो 2013 में there were 19 questions, 2024 में there were 15 questions, वो वेरी करता रहा है, but 15 to 20 questions you will be getting from economy, तो around 20% of your preparation is from economy। इसमें से 12 to 13 questions वो होते हैं जो is easily doable once you understand the fundamental concepts, and you have to prioritize those questions. You have to ensure that whenever you're attempting tests, कई बार ना आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे and you will find very factual questions कि ये रोड कहाँ पे है या ये इस स्कीम के अंदर कितना बजट एलोकेटेड है। Those are very factual things. ROI on those things are not good. इतने सारे स्कीम से सबका बजट रट के, सबका वो रट के नहीं रख सकते ना डेटा अंदर का पूरा, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट feasible. तो व्हाट यू शुड बी एम्फेसाइजिंग ऑन इज द बेसिक क्वेश्चंस, एंड देन करंट अपडेट्स में हम जो जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, नए स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स है या फ्लैगशिप स्कीम्स प्रोग्राम्स है, उनका एनालिसिस, उनका डेटा, नॉट एवरी निटी ग्रिटी। It should be there should be a situation where you are able to understand कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मॉक टेस्ट में पूछ तो लिया है, बट आई शुड नॉट वरी अबाउट इट बिकॉज यूपीएससी में नहीं आएगा, और आएगा तो 2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा। इसकी बजाय आई शुड एम्फेसाइज ऑन द स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट मींस यार मेरा हिस्ट्री वीक है, मेरा ज्योग्राफी वीक है, मेरा इकोनॉमी के बेसिक फंडामेंटल एरियाज वीक है। आई शुड एम्फेसाइज ऑन दोस थिंग्स। आर वी गेटिंग इट? आप एक एक स्कीम जो 2014 से अब तक आया है उसके सारे डिटेल्स याद करोगे तो फिर फंस जाओगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट वाले के करेंगे। अब मॉक टेस्ट में वो किसी भी रैंडम स्कीम का कुछ पूछ लेंगे। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यार कोई बात नहीं, लेट देम आस्क इट, नो इश्यूज। यू शुड वरी ओनली व्हेन यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन फंडामेंटल एरियाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड यू शुड वरी इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स इन स्कीम्स दैट यू हैव स्टडीड, उसमें नहीं आ पा रहा है कुछ, क्योंकि आपने हम आपको सारी फ्लैगशिप स्कीम्स, सारी रिसेंटली लॉन्च स्कीम, लास्ट 1 ईयर में लॉन्च स्कीम्स, फ्लैगशिप स्कीम्स, इवन इफ इट्स 10 ईयर ओल्ड, 20 ईयर ओल्ड, विल डू इट। अब एमजी नरेगा बहुत पुराना है बट इट्स अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री जनधन योजना पुराना है बट इट्स अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव, तो ऑल इट्स अपडेट्स वी विल बी डूइंग, है ना? तो फ्लैगशिप स्कीम्स में कुछ पूछा है वहां गलती कर रहे हो, या फिर लास्ट 1 ईयर में जो स्कीम्स लॉन्च हुए वहां गलती कर रहे हो, दैट इज समथिंग यू शुड वरी अबाउट। बट कोई भी रैंडम स्कीम का कुछ इन डेप्थ जाके डेटा पूछा हुआ है, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, राइट? तो आउट ऑफ 15-20 क्वेश्चंस, 10-12 क्वेश्चंस आर ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। प्रायोरिटाइज दैट। हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स गलत नहीं होने चाहिए। आर क्लासेस प्राइमरली अभी जो 6 एरियाज बताए मैंने आर फोकस्ड ऑन दैट। देन बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो चीजें आती हैं उससे 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, and then there are 3-4 questions from other current affairs, other dynamic things going on. This constitutes your around 20 questions that come from economy. So first 12 questions very important, we should be like बहुत अच्छे से आता है। 3-4 questions which come from budget economic survey of India very important, latest government publications है उसमें जो दिया हुआ है वो तो पता होना चाहिए। जो बाद के 3-4 questions है उनमें से 1 or 2 questions would be any random thing, ignore it. 1-2 questions would be some old flagship initiative, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। अब ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसका थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए। दिस इज समथिंग वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद। तो इन एवरी सब्जेक्ट देयर मे बी 2-3 क्वेश्चंस दैट यू शुड बी लाइक कोई बात नहीं, नहीं कर पाया तो। 6 सब्जेक्ट्स है, 2-3 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस आर लाइक कोई बात नहीं, इग्नोर करना है। 88-90 क्वेश्चंस तो फिर भी अटेम्प्ट कर पाओगे। आउट ऑफ 88-90 इवन इफ यू आर एबल टू मेक 60 क्वेश्चंस राइट,
you are getting more than 100 marks. If you're getting more than 100 marks, more than 95 marks, sorted है, right? So this examination is not about perfection. I should be in a position to attempt all the questions. I recently saw a teacher recommending कि आपको उपिंदर सिंह पढ़ना चाहिए एंशिएंट मिडिवल कल्चर के लिए, अगर आपको सारे क्वेश्चन सही। अरे उपिंदर सिंह मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, ऑप्शनल वाले बच्चे भी रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। Why would a student preparing for preliminary examination will read entire उपिंदर सिंह? मैं अपना बेसिक प्रिपरेशन करके जाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं। एनीवेज कट ऑफ इज 90 to 100 के बीच में आ रहा है, 80 to 100 के बीच में इट हैज बीन वेरिंग फॉर सम टाइम्स। आई डू नॉट हैव टू टारगेट 150 मार्क्स, 110 120 आ जाएंगे। आई डू नॉट हैव टू टारगेट 150 मार्क्स 170 मार्क्स। उस चक्कर में no one gets those kind of marks, but what happens is you decide कि मेरे को तो हिस्ट्री अपनी परफेक्ट करनी है। अब किसी ने मुझे बोला उपिंदर सिंह पढ़ लेना है, मैं उपिंदर सिंह पढ़ने में लग गया, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। बट उस चक्कर में क्या होगा ना, आपका साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एवरीथिंग वुड सफर। दैट इज व्हाई बेसिक प्रिपरेशन, फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, डू वेल देयर, इंश्योर दैट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टेस्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है गलत हो रहे हैं तो अपने आप को 2 थप्पड़ इधर इधर मारो, go back to your basic concepts and see you're not making mistakes there. If you're making mistake on some random factual detail of even a flagship initiative, let's say प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में उन्होंने कुछ एकदम ही रैंडम पूछा हुआ था, उन्होंने ये पूछ दिया कि विमेन का परसेंटेज 60% है और रियलिटी में 55 है, उस वजह से कुछ गलत हुआ, कोई बात नहीं। ये टेस्ट बनाने वाले पागल है, अगर यूपीएससी ने भी पूछ लिया वो भी पागल है। नहीं, मतलब क्यों करना है वो सब? इज इट रियली पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्ट? इट इज नॉट पॉसिबल, एंड that will not determine your selection. Your basics will determine your selection. Okay, so let's come to today's class. अब देखो इसमें prerequisite I'm saying 0. Even if you do not have any background as such, no problem. मैं हर चीज आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगा. I'll emphasize that everything is from basics. All of us are able to understand fundamentals, but because it's a crash course and because we have limited number of classes, आपको थोड़ा concentration के साथ पढ़ना पड़ेगा. Don't make me repeat things, else the time taken here will be much higher. So I do not assume that you have many of you have already cleared mains. कुछ बच्चे हैं जो already services में, उन्होंने भी join कर रखा है course, right? तो हमारे कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन सब ने एनरोल कर रखा है इस कोर्स पे वापस कि सर इससे ही हुआ था हमारा लास्ट ईयर सिलेक्शन, वी वांट टू वॉच इट ऑन 1.5 का स्पीड, 2 का स्पीड, वी डू नॉट वांट टू मॉडिफाई आवर स्ट्रेटजी. तो देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिटन मेंस, देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी गिवन इंटरव्यूज, देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस कोर्स. तो आई कैन नॉट डू इनजस्टिस टू देम एंड अननेसेसरली एक ही चीज पे 10 बार घूम रहा हूं. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, while I'll cover each and everything, I'll not assume that you know anything, but एक बार में सुनो और समझो और आगे चलो, right? Whenever you feel like कि these are some concepts that we are already aware of, मुझे बता दो, I'll skip that. Okay, but no unnecessary this thing कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो. अगर कुछ डिफिकल्ट होगा मैं दोबारा बता दूंगा, नहीं तो मैं बोलने वाला हूं कि ध्यान से सुनो, बिकॉज वी हैव 40 आवर्स एंड वी हैव टू यूटिलाइज इट वेरी प्रॉपर्ली. ओके, तो देयर इज नो प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट. आपका स्टडी मटेरियल, आपके क्लास नोट्स एंड इफ नीडेड करंट अफेयर्स नोट्स. करंट अफेयर्स यू मे बी डूइंग इट फ्रॉम हियर और यू मे बी डूइंग इट एनीवेयर एल्स, दैट्स नॉट एन इशू, बट प्राइमरली यही आपके पढ़ाई होंगे. मैं बेसिक्स सारे आपको यहाँ पे करवा के दूंगा. नाउ if some of you wants to read कि यार नहीं मुझे I want to read some basics at my own, तो this book Indian Economy by Shankar Ganesh is what I recommend. It's a very small book. It may look like a 200 page का book, but it is not. उसका font size बहुत बड़ा है and all, तो it's a very small book. And because जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, it is in sync with that. You're doing these classes. If you do that book, that will be more relevant. But again, I'm telling you, आपके अंदर के चुल शांत करने के लिए है. Each and everything in that which is there in this book, I already have it in the notes. But if you still you like people feel no, यार एक book होनी चाहिए, उस चक्कर में
एक बुक मैंने यहाँ पे रिकमेंड करी है, बाकी जितनी भी रिलेवेंट बुक्स है, जैसे चाहे मृणाल सर की जो हैंडआउट्स आते हैं, चाहे विवेक सिंह सर की किताब है, चाहे रमेश सिंह सर की किताब है, सब मेरे टेबल पे पड़ी हुई है। आई एम फ्लिपिंग ऑल ऑफ देम टू इंश्योर दैट कोई भी रिलेवेंट कॉन्सेप्ट विल नॉट बी मिस्ड इन योर क्लासेस, एंड दस यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू एनी ऑफ दोस थिंग्स। आप देखो नेशनल इनकम पे ही अगर हम 30 पेजेस कर रहे हैं, उससे यू विल अंडरस्टैंड दैट each and every concept, each and everything that may be there, that may be possible, we are covering it here. Okay, तो अगर किसी को बहुत मन है कि नहीं कोई एक किताब तो रखूं मैं टेबल पे, ये कोचिंग के नोट से थोड़ी पढ़ाई होती है, get this book, this is a very fundamental basic concept based book, a good one. Okay, इससे क्योंकि हम क्लास में थोड़ा इससे सिंक में रहते हैं, मैं जब से पढ़ा रहा हूं आई हैव बीन इन सिंक विद दिस बुक, इट इंश्योर्स दैट आपके नोट्स के कॉन्सेप्ट और उसके कॉन्सेप्ट सेम तरीके से समझाए गए। कॉन्सेप्ट्स आर सेम एवरीवेयर, बट दे हैव बीन टॉट, दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन similar manner. What that would lead to is it would be easy for you to read the book. While we'll cover all the concepts, our way of explaining it may be very different from the way it has been explained in NCERT, the way it has been explained by Ramesh Singh, the way it has been explained by Vivek Singh, the way it has been explained by Mrunal sir. They have their own methods. I have my own methods. तो सिंक में रखने के लिए कोई बुक चाहिए, अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए कोई बुक चाहिए, तो ये वाली रख लीजिएगा। ओके, नाउ बिफोर आई गो इनटू नेशनल इनकम, देखो जब हम जीडीपी को डिफाइन करेंगे विल से द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इससे शुरू करते हैं। व्हाट इज फाइनल गुड, व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड, बेसिकली हाउ डू वी क्लासिफाई गुड्स, हाउ डू वी क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्ट है उसको वी कैन क्लासिफाई इनटू फाइनल गुड्स or intermediate goods. This is one way of classifying it. Or we can classify final goods further into consumption goods and capital goods. So let's understand. थोड़ा सा basic से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कोई भी goods good है, we can classify it as final or intermediate. हम we want to jump onto GDP and GDP's definition, but जब हम वहां बोलेंगे कि monetary value of all the money value of all the final goods, what is final good, what is final goods and services, let us first look at that concept. देखो, let's assume that in our economy there are only two entities. एक household sector है which is the consuming sector, and एक business sector है which is the producing sector. So we have household which consumes and we have business which produces. You may say कि सर household में farmer है, वो तो produce भी करता है, but जब farmer produce कर रहा है उसे हम business consider कर रहे हैं, जब farmer का household consume कर रहा है उसे हम household consider कर रहे हैं। तो देखो, what is a final good? This is what we wanted to understand. What is a final good? Final good is anything that is going to household. This is not the complete definition. पहला part है anything that is going to household, चाहे वो raw material के form में जा रहा हो, it's a final good. That is, प्याज जा रहा है to a household. Now it's a raw material, they will prepare omelette out of it. But still, if प्याज is going to household, it's a final good. Because in our economy, any processing, any service addition is done by business sector. So if something is going to household, it is final good. अब if something is going to business, वहां पे we may have final good or we may have intermediate good also. तो कोई भी good which is going to further get processed, जिसपे suppose I buy some plastic and I make this pen out of it. So plastic further is getting processed. That plastic is not being used as it is. Then it is a intermediate good. कोई भी good which is going to be further processed और उस पे further service is going to be added before it is sold. Then it is a what kind of good?
intermediate good. But इसी में तो that was inter. But इसी में in business sector also they may buy certain things as capital, as something which they are going to use for making production happen. जैसे let's say here when I bought onion, when onion was bought by household, was it a final good, intermediate good? Household में कुछ चला गया, final है. Now let's say I'm a omelette maker, जो रोड पे खड़ा होके मैं omelette बना रहा हूँ. I'm a business. I bought onion. Is it final or intermediate? क्या हुआ रोहित जी? All good? Okay. Is it final or intermediate? It is intermediate because it's further going to get processed. It is going to be mixed with eggs and everything. Final product will be omelette, which is being consumed by individual or household. Right? But in the same business, this person may also have a stove. क्या ये स्टोव फर्दर प्रोसेस हो रहा है? नहीं, ये स्टोव फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा. वी आर यूजिंग दिस स्टोव फॉर कुकिंग. सो दिस गुड वुड बी व्हाट काइंड ऑफ गुड? फाइनल. बात समझ में आई? एनीथिंग गोइंग टू हाउसहोल्ड इज फाइनल. फॉर बिजनेसेस द कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स. राइट. नाउ अभी हम और डिटेल में आते हैं. तो फाइनल गुड्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल. फाइनल गुड्स को हम आगे और डिवाइड करेंगे, बट फर्स्ट लेट अस स्टिक टू फाइनल गुड वाला फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स वाला कॉन्सेप्ट ओनली. एनीथिंग गोइंग टू हाउसहोल्ड इज फाइनल. एनीथिंग गोइंग टू हाउसहोल्ड इज फाइनल. बिजनेसेस में देयर मे बी इंटरमीडिएट गुड, देयर मे बी फाइनल गुड. अब ना थोड़ा सा और समझते हैं. This TV या this computer I should say, bought by LevelUp IAS, is it a final good or a intermediate good? Final, because it is not getting further processed. Right? I'm using it to provide services. Fine, but it is not getting reduced. It is not getting consumed. It is not getting further processed. ये capital good as it is. It's a final good. But suppose मैं इसे अपने घर में लगाऊं. In my household, when LevelUp bought it, it was a final good. When I buy it and install it at my home, is it a final good or intermediate good? It's still household में चला गया तो वो final ही है. Household में कुछ भी जा रहा है. We may buy some pickles or some mangoes and मम्मी उसका pickle बना देती है. देखो सो गए, उसे उठा दो. हाँ? कैसे? चाहे तो अभी से डिमांड चालू हो गए. थोड़े टाइम रुको. How we bought mangoes, we took mangoes to home. मम्मी ने उसका काट के अचार बनाया, फर्दर प्रोसेस किया. But this mango was final good because it reached the household. But the same mummy had started a business and was selling this achar in the market. Then it's a business, and वहां पे the mango that you bought was intermediate. बात समझ में आई है? Okay. तो final goods are items that are purchased by household. पहला part. If they're purchased by household, that's final good. Or businesses for direct consumption or use. Businesses are buying it for direct consumption or use. Businesses are not buying it to further process it and sell it ahead. Then it's a final good. Got it? दोनों aspect. They are ready for consumption and don't require further processing or transformation. So there may be final consumer goods, there may be final producer. Final consumer good जो हाउसहोल्ड ने सीधा खरीद लिया, कंज्यूमर ने सीधा खरीद लिया, दैट इज अ फाइनल कंज्यूमर गुड. फाइनल प्रोड्यूसर गुड, समथिंग दैट इज यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट एंड दैट इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर मेकिंग फर्दर प्रोडक्शन. जैसे मशीन एक प्रोड्यूसर ने खरीदा, दैट्स अ फाइनल गुड. ये टीवी मैंने खरीदा, दैट्स अ फाइनल गुड. दीस चेयर्स दैट वी हैव, दीस चेयर्स आर दीस फाइनल गुड्स? यस, दीस चेयर्स आर फाइनल गुड्स. ओके, नाउ थोड़ा सा इंटरमीडिएट गुड्स पे चलते हैं बिफोर वी कम टू एक्सपेंडिचर वाला पार्ट. व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स?
Intermediate goods are used in production process to create other goods and services. They are not meant for final consumption but for further processing, assembly और service. ये वाला part ध्यान रखो. Intermediate goods are going to be further processed. They're going to be assembled. और उसमें some service may get added. Now, एक चीज समझते हैं. When household bought this TV, was it a final good? Anything going to household is a final good. When a business bought this TV, was it a final good? LevelUp ने जब इसे खरीदा, it was a final good. But now let's think of a Chroma store. Chroma store bought this TV for further sale. Is it a final good? Intermediate. Why? Because they're adding service onto it. Chroma may have bought it in 2.5 lakh rupees. They're adding sales wala service on it and they're going to sell it in 3 lakh rupees. मतलब उसमें और सर्विस ऐड किया ना उन्होंने. You may say, sir, physically तो nothing was added. That doesn't matter. Service does not need to be physically some modification happening. Service can be just sales service. So when the same TV was bought by me as a household, that was a final good. Same TV, when it was bought by me as a business, it was a final good. But if I had bought this TV for resale purpose, it means I'm going to further add some service onto it before it's finally consumed. It becomes intermediate goods. क्या बात समझ में आ रही है? Okay, तो intermediate goods में it's going to further get processed, get assembled, get serviced. Are we clear about this? Okay. So, raw material, semi-finished material, other products used during manufacturing. All these are part of intermediate goods. Shirt purchased by retailer from wholesaler for resale are intermediate goods. Whereas shirt, same shirt, मैंने जाके purchase उससे खरीद लिया. It's a final good. Are we getting it? Are we able to understand the difference between final goods and intermediate goods? और जब हम बोलते हैं GDP is the monetary value of all final goods and services. So, monetary value of shirt will be determined by not at the price at which retailer has bought it, at the price at which the final consumer will buy it. जब मैंने अपना सेल का सर्विस ऐड करने के बाद जो बेचा है, उसका monetary value is something that is added in the GDP, not of intermediate goods, of final goods. Okay, now, तो ये basic concept समझ में आया ना? We'll come back to this aspect more, but now let's go to GDP, है ना? ये बहुत सारे basic concepts मैंने यहाँ दिए हैं. We'll keep coming back to it, but let us jump on to understanding what national income is. I hope we have been able to differentiate between intermediate goods and final goods. Let's jump on to. I'll come back to these concepts. Don't worry. Let's start with national income. हमें primarily ये पढ़ना था, but for this we needed some background basic understanding. So we'll keep going back to our basic things. Now, what is GDP? What is GDP? That is what we have to start with. Let's say this is my domestic territory. This is my economic territory. अभी economic territory का मतलब समझते हैं. But anything, any good, any service, final good and final service being produced in this domestic territory is GDP. GDP में gross domestic product है, तो हमारे domestic territory में या हमारे economic territory में, इसका domestic territory, or we can use the term economic territory.
एनी फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन माय डोमेस्टिक टेरिटरी in a particular year is the GDP of that year, in a particular month is the GDP of that month, in a particular quarter is the GDP of that quarter. Okay, so gross domestic product is the total monetary or market value of all the final goods and services produced within country's domestic territory or economic territory in a specific time period. अगर आपको जीडीपी 3 मंथ का देखना है तो 3 मंथ में उस डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ. Now this domestic territory is different from political territory. आप इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी की बात करोगे तो वी हैव अ एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इतना एरिया है इंडिया का. इसको हेक्टेयर्स में डाल देते हैं तो 328 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया आ जाता है. स्क्वायर किलोमीटर में 3.28 मिलियन स्क्वायर, दैट इज आवर पॉलिटिकल टेरिटरी. बट डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट. वाइल हम जब पॉलिटिकल टेरिटरी की बात करेंगे, लेट्स से दिस इज माय 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. आई एम सेइंग दिस इज नॉट exactly what economic or domestic territory is. What is economic territory, what is domestic territory? ये वाला रीजन तो इंक्लूडेड है उसमें, बट इसमें ना वी मे हैव लेट्स से एक यूएस का एम्बेसी, फाइनल सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड देयर. यूएस का एम्बेसी इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ आर डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी. एंड देन इससे बाहर भी कुछ हो सकता है विच इज स्टिल पार्ट ऑफ आर डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी. लेट्स से अ शिप owned by Indians or owned by a resident of India, a business of India is working in international waters. वहां पे जो सर्विसेज दी जा रही है, that is this ship will also be considered part of India's domestic territory. A flight, let's say टाटा का कोई प्लेन है, it is giving services between Singapore and New York. Are they providing final services? They are providing final services. It is also part of India's domestic territory. Are we getting it? Are we understanding it? So we will remove this is अब in US, let's say this is US. US में इंडिया का एम्बेसी होगा. अब when we were removing this, we also have to add India's embassies all over the world. That's also part of our domestic territory. So final goods and services produced in these territories, in these areas, is India's GDP, gross domestic product. Domestic मतलब domestic territory or economic territory. Okay. What are the components of domestic territory? The physical geographical area of a country is different from it. हमने समझा है. Components of domestic territory में we include territory lying within the political frontier, including the in territorial waters, ships and aircraft operated by residents of the country across different parts of the world. That is Indian aircraft moving between Singapore and USA. That's also part of our domestic territory. Fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platform operated by residents of the country in international waters, engaged in extraction in areas in which country has exclusive rights of exploration. Embassies, consulates, military establishments of the country located abroad. For example, Indian embassy in US is part of India's domestic territory, and USA's embassy located in India is not part of domestic territory, not part of India's domestic territory. Got it? तो जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वेयर इन योर डोमेस्टिक टेरिटरी. इट्स डिफरेंट फ्रॉम जीएनपी. आज हम समझेंगे थोड़ा सा जीएनपी क्या होता है. तो द money value of all final goods and services produced within the domestic territory of the country within a specified time period is GDP. Now, let us understand the concept of depreciation a bit. Let us understand the concept of depreciation a bit. देखो, let's say we have an economy where there are a few businesses, or let's say there's only one business, one industry. You know, it is making some machines.
it is making some machines. And right now, this business has 10 machines, using which it is making more machines. Yes. Now it is capable of producing 100 machines in a year, and this is the final product. तो हम जीडीपी बोलेंगे कि इस कंट्री का जीडीपी, इस कंट्री में दिस इज द ओनली प्रोडक्शन दैट इज हैपनिंग. तो व्हाट इज द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री? 100 मशीन्स का जो मनी वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू हो. बट एट द सेम टाइम एवरी ईयर वन ऑफ इट्स मशीन कीप्स ऑन गेटिंग एक्सपायर्ड. तो इस इकोनॉमी ने 100 नए मशीन्स क्रिएट तो किए हैं, बट टू क्रिएट दिस 100 मशीन देयर वाज अ लॉस ऑफ सम कैपिटल एसेट. तो इन रियलिटी जो 100 मशीन्स बनी है, उनमें से 1 मशीन विल बी यूज्ड फॉर ensuring कि हमारा कैपेसिटी सेम रहे. द एडिशन दैट इज देयर इज ओनली 99 मशीन. दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी में वी हैड 100, जीडीपी में वी हैड all 100 machines getting produced, but net addition कितना हुआ है? Because some of the production was used for fulfilling the gap that has been created because of depreciation. The remaining production is your net domestic product. Are we getting it? तो जब हम जीडीपी से, this was our GDP, इससे हमने क्या माइनस कर दिया? Depreciation. This was our depreciation, one machine. When we remove that depreciation, the extra production that we have been able to make is our net domestic product. Net domestic product is GDP minus consumption of fixed capital or minus depreciation. Got it? बात समझ में आ रही है? GDP was final value of money value of all final goods and services. जितना भी हम प्रोड्यूस कर पाए, that is GDP. But in producing it, we have faced some depreciation. So all the production is not just available for consumption. Some of it will be used for fulfilling this gap. So extra production that has happened after this gap is fulfilled is our net domestic product. Is our net domestic product. ये बात समझ में आ रही है? GDP, NDP. Now एक और चीज समझते हैं. Factors of production क्या हो? Because we have to come to gross national production now. We have understood GDP, we have understood NDP. GDP, NDP मन में आप क्लियर पिक्चर बना पा रहे हो? पक्का? ओके. देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, इनफैक्ट हमने इसे पढ़ा भी रखा है. लेट्स गो बैक टू योर बेसिक नोट्स जहां पे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, so that I don't have to write everything again and again. Factors of production are resources, inputs that are used to produce goods and services. Anything, who is producing goods and service? Business. Business जो भी चीजें यूज करेगा for producing goods and services, that is for adding value, that is factor of production. यहां पे देखो, raw material is not part of factor of production. Please understand. Why? Because उस पे value add करना है. How will you add value? जिन मेथड से आप वैल्यू एड, जिन रिसोर्सेज से आप वैल्यू एड करोगे, those are factors of production. So we generally divide factors of production into 4 types or 4 parts: land, labor, capital and entrepreneurship. Land, labor, capital and entrepreneurship. इन चारों चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं, because we are going to use it in our understanding of gross national product. तो कोई भी बिजनेस है, it will be using land, labor, capital and entrepreneurship. अब देखो, the meaning of land is not traditional meaning of land कि मेरे को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मेरे पास 1 एकड़ जमीन है. That is land, but यहां पे land का मतलब सिर्फ वो नहीं है. That is there. 1 acre of land is part of your definition, is included in this land, but
all the natural resources which are used in the production process. It may be mineral, it may be water, it may be forest. तो land area तो है, land area is a natural resource, but other things that you extract from land is also part of the meaning of land here. तो factors of production, वो सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उसमें land is one of the factors of production, and land includes not only the traditional meaning of land but all the natural resources that you are using. तो are we able to understand it? आप फॉरेस्ट से जो चीजें यूज कर रहे हो, वाटर जितना यूज कर रहे हो, माइनिंग जो कर रहे हो, all those things will be considered factors of production में as component of land. Okay, and owner of the land, जैसे मैंने एक बिजनेस को अपना लैंड दिया, owner of the land is supposed to get rent. Owner of the land is supposed to get rent. ये कुछ वो जनरल टर्म्स है, हम यूज करते हैं. यू में से कि उसे तो सर इनकम मिल रही है. इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस फॉर्म, रेंट, वेज, प्रॉफिट, उन सबको हम समझेंगे. बट ओनर ऑफ द लैंड इज सपोज टू गेट रेंट. ऐसे ही लेबर इज अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लेबर विल बी वर्किंग, विल बी प्रोवाइडिंग फिजिकल लेबर. अब फिजिकल लेबर डज नॉट ओनली मीन, फिजिकल लेबर डज नॉट ओनली मीन कि मैं जाके गड्ढा खोद रहा हूं. फिजिकल लेबर कैन ऑल्सो मीन आई एम यूजिंग, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर and I'm making software, I'm making codes. But फिर भी मैं किस कैटेगरी में हूं? मैं लेबर. And labor is supposed to get wage. लैंड के लिए जिसने लैंड प्रोवाइड किया उसको क्या मिलेगा? रेंट. तो देखो, business wants factors of production to make production happen. All the factors of production are owned by household. Household will be giving it what? Land. लैंड के बदले में बिजनेस क्या देगा उसे? रेंट. हाउसहोल्ड ही इसे देगा लेबर. आई एम वर्किंग फॉर LevelUp IAS. आई एम पार्ट ऑफ अ हाउसहोल्ड एंड दैट हाउसहोल्ड हैज प्रोवाइडेड LevelUp IAS द लेबर. उसके बदले में व्हाट विल LevelUp IAS गिव मी? ओके, लेट्स गो बैक. कैपिटल, थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब देखो, LevelUp IAS को फंक्शन करने के लिए वेरियस टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग चाहिए. लैंड वाज पार्ट ऑफ लैंड, बट ये बिल्डिंग इज पार्ट ऑफ कैपिटल. Machinery is part of capital, equipment is part of capital. Here there may be financial capital also needed. एक कोई भी business run करने के लिए all these things may be needed. These on these things you get on capital. जिस कैपिटल ने, अब ऐसे सोचो कि कोई लैंडलॉर्ड होगा इस बिल्डिंग का, उसने ये बिल्डिंग रेंट पे दी है. नाउ दैट पर्सन इज सपोज टू गेट इंटरेस्ट. यू में से कि सर उसे तो रेंट मिल रहा है. प्लीज समझो, जो हम कन्वेंशन यूज कर रहे हैं ना, बिकॉज वी कीप यूजिंग दीज कन्वेंशंस अगेन एंड अगेन इन आवर एक्सप्लेनेशन. तो प्लीज अंडरस्टैंड, कैपिटल के बदले आपको क्या मिलता है? रेंट, सॉरी, इंटरेस्ट मिलता है. एंड फाइनली बिजनेस रन करने के लिए चाहिए एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर हु हैज स्टार्टेड द बिजनेस, है ना. एंड एंटरप्रेन्योर विल गेट बात समझ में आई है? तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दे गेट, लैंड के बदले हाउसहोल्ड को क्या मिलता है? रेंट. एंड लैंड डज नॉट ओनली मीन लैंड, इट इज नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड. लेबर के बदले आपको क्या मिलता है? वेजेस. लेबर डज नॉट मीन ओनली द फिजिकल लेबर. लेबर डज नॉट ओनली मीन, बट उसके बदले आपको वेज मिलेगा. तो even if you are CEO of Microsoft, you are part of labor, and your household is getting wage from Microsoft. It may be $500 million, but it is still a wage. Do we get this? Third factor of production was capital, tools,
instruments, building, some financial capital, उसके बदले क्या मिलेगा? Interest. Anyone who has given capital, any household which has provided capital to business, it will get interest. And finally, entrepreneurship. Business run करने के लिए there has to be a person who is risking a lot of things. That person gets profit, or that household which contributes to the business gets profit. ये 4 factors of production समझ में आए. अब आते हैं नेशनल इनकम समझने को. देखो, इसे ना बहुत ध्यान से समझना है. National income या gross national product. We understood GDP. Let's say this was my GDP. अब मैं इस let's say this rectangle is representing the GDP of the world. पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन हो रहा है of final goods and services is represented in here. And this circle is representing GDP of India. This circle is representing GDP of India. GDP of India मतलब all the goods and services that are produced in my domestic territory. All the goods and services that are produced in my domestic territory. अब ऐसे समझो, this is my domestic territory, peninsular India बना दिया मैंने. This is my domestic territory, ऊपर वाला मुझे बनाना नहीं आता. इसमें ना, who has provided factor of production? Let's say Elon Musk tomorrow comes and sets up a factory here. Elon Musk comes and sets up a factory in India. Will that production be part of India's GDP? Yes. Yes. Why? Because it is being produced in India's domestic territory. Because that is produced in India's domestic territory. Tomorrow we go and set up a factory in US. Will that be part of India's GDP? No. Because that is part of, that production is happening in whose economic territory? US का economic territory. Okay, but so this is all the production happening in our territory, and this is इसके बाहर वाली चीजें rest of the world, GDP of rest of the world. But अब आते हैं in this GDP which is our domestic production happening in our territory. Let's say this part of production of the entire GDP, this part of the production was happening because of factors of production provided by outsiders, non-residents, जो बाहर के residents हैं. Elon Musk तो इंडिया की domestic territory के बाहर वाला है. इन्होंने कुछ factors of production provide किए, land, labor, capital और entrepreneurship. Because of that, some production has happened in India. That is not included in India's national product. That is not included in India's gross national product. But at the same time, Indians may have contributed to some factors of production here. Indians may have contributed to some factor of production outside. So let's say we call this 1, we call this 2. 2 has to be added, 1 has to be removed. तो GDP में आप 2 को ऐड करोगे and 1 को रिमूव कर दोगे, you will get GNP. और we call it GDP. तो GNP को हम बोलते हैं GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. देखो, पहले तो factor income from abroad net को छोड़ दो. This is the factor income from abroad because यहाँ पे who provided land, labor, capital, entrepreneurship? We provided. So income will be coming to India, a resident in India. This is factor income from abroad, but मैं बोल रहा हूँ net factor income from abroad. That is when factors of production was provided by residents, non-residents. Income will go to whom? Income will go to them. So we have to remove that. So net factor income from abroad. Let's come back to our
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, इसे नेट प्राइमरी इनकम भी बोलते हैं और नेट फैक्टर इनकम. प्राइमरी इनकम, फैक्टर इनकम, सेम थिंग, सिनोनिमस. फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अब्रॉड इस जीएनपी. अब यहाँ पे ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे. अब मिस्टेक विच a lot of teachers also make. I personally did not want to teach economy, and we have been since last 2 years looking at teachers. We have been taking a lot of demos, और वो यहाँ पे आके mistakes कर देते हैं ज्यादातर teachers, and we are like जाओ, ये problem है. तो यहाँ पे कुछ वैसा समझते हैं कि real meaning of GNP properly will understand that. But ये भी आपको basic level पे समझ में आ गया. GDP plus net factor income from abroad, that is our residents may have provided some factor of production outside, उससे जो income आ रही है we will add it in our GDP, and someone of foreign residents may have provided some factor of production in India's domestic territory. So while Elon Musk will be producing cars here, it has been produced here, it is part of India's GDP, but eventually the income for it will go to him, Elon Musk. Income for it will go to Elon Musk, and thus it will be part of USA's GNP, not India's GNP. तो जब हम इंडिया का जीएनपी कैलकुलेट करेंगे हम बोलेंगे जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम जो हमें बाहर से आया है माइनस फैक्टर इनकम जो इंडिया से इट्स गोइंग आउट. आर वी गेटिंग इट? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके. यहां पे वी हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज प्राइमरी इनकम. तो प्राइमरी इनकम इज द इनकम अक्रूड टू इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स एज अ कंसेक्वेंस ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द process of production or ownership of assets that may be needed for the purpose of production. What is needed for purpose of production? Factors of production. So it basically includes income from all the factors of production: wages, property, income, interest, profit. Wages labor के लिए, property income, rent वाला concept, interest capital वाला, profit entrepreneurship. Right. Now what is अब आ जाते हैं एक और इसको समझने. Let's say this situation. This was my GDP. This part of GDP I'll remove because it is coming from factor of income from abroad. This part I'll add in my GDP, and what will I get? GNP. है ना? तो इसे मैं 1 बोल देता हूं, इसे मैं 2 बोल देता हूं. तो GNP I called as GDP plus 2 minus. You do not have to write this formula. Net factor income from abroad is the formula. ये बस समझाने के लिए. Now ऐसे समझो, suppose I have a friend in US and he transfers me. I tell him, भाई मुझे पैसों की जरूरत है थोड़ी सी, transfer me 1 crore rupees. He is like हाँ ले ले. I tell him कि यार मैं तेरे को दे दूंगा 6 महीने बाद. He is like अरे don't worry, भाई है तू मेरा. He gives me 1 crore. Or let's not take this example. Let's think of the same friend. He's a NRI now. NRI मतलब non-resident Indian. He's still an Indian citizen. He's still an Indian citizen, but is a resident of US now. He's become a resident. एक particular time period तक आप रह जाते हो तो आप non-resident हो जाते हो, non-resident Indian बन जाते हो. He's a non-resident Indian. Now he sends 1 crore rupees to his father. 1 crore rupees to his father. क्या ये income from abroad आया? Will it be included in India's GNP? It won't be. क्यों? समझो इस बात को. Why will it not be included in India's GNP? Which transfer will be included in India's GDP? Which will not be included in India's GDP? Let's understand this. Is it a factor income? जिस रेसिडेंट को इनकम मिला है उसके उन्होंने क्या कोई लैंड लेबर कैपिटल प्रोवाइड किया था? नहीं. It's not a factor income. If it's not a factor income, it's not part of GNP.
It's not part of gross national income. But let's consider another scenario. Let us consider. Achha minute. This was GNP, GDP plus 2 minus 1. This was our GNP. Fine. अब यहां से एक इंडियन कंपनी for 3 months send some people to work in Dubai. किसी प्रोजेक्ट पे 3 people went to Dubai. They worked there. उनको कुछ 1 crore रुपए, they got 1 crore rupees and they send this 1 crore rupees back to India. Is it part of India's GNP? Yes. It is part of India's GNP. Why? Because यहाँ पे उन्होंने लेबर प्रोवाइड किया, फैक्टर ऑफ इनकम प्रोवाइड किया. Do you get this? So not every remittance is part of India's national income. It may be part of disposable income. उस पे आते हैं, next term पे आते हैं. We'll understand the meaning of next thing. But not every income that is coming to India is part of India's national income. Only that income which is coming because of factor of production being supplied by resident. These people were not considered NRIs. Why? Because they're resident in India. They went there for a project and came back. They went there for 3 months, completed that project, came back. Eventually money came back to India, and it is because of the labor provided by a resident of India. Then it is part of India's national income. Otherwise, it is not part of India's national income. कोई यूएस में काम करता हुआ पर्सन जो यूएस में ही सेटल हो गया है, वो अपनी फैमिली को यहाँ पे 1 crore rupees भेज दे रहा है. That's not part of India's national income. Suppose India faces some earthquake and केरला में फ्लड्स आए और यूएई से केरला में पैसे आए to help them. Is it part of India's national income? That transfer, is that part of India's national income? No, that will not be, because that transfer is not because of, it's not a primary income. It's not because the transfer is not happening because we supplied some factor of production. Are we able to understand this? सारे लोग समझ पा रहे हैं? तो GDP, all the production that may have happened in my domestic territory. GNP, all the production that is happening because of factors of production owned by residents. What is GNP? Gross national product. जो residents हैं, उनका जो factor of production है, owned by, factor of production owned by residents, उसकी वजह से जो भी production हो रहा है, that is GNP. That factor of production may be used in India. That factor of production may be used in outside India. But in factors of production की वजह से जो भी production हो रहा है, that is part of India's GNP. Are we able to understand this? So, we defined GNP as GDP plus net factor income from abroad. We can also write it as, how can we write GNP? All production because of factors provided by Indian residents. That is GNP. क्योंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, जस्ट 1 सेकंड बेटा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा नहीं था वो तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड हमारे बाहर डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा था वो हम ऐड कर रहे हैं. तो बेसिकली व्हाट इज GNP? GNP is all the production which is happening because of factors of production provided by Indian residents. Indian citizens नहीं, Indian residents. NRI भी इंडियन सिटीजन था, NRI भी इंडियन सिटीजन था, इंडियन रेसिडेंट्स. ये एक्चुअली एनसीईआरटी में नेशनल यूज करके ना कंफ्यूज कर दिया है. We'll explain what is the issue there. Got it? Are we clear about
ग्रॉस नेशनल, डू वी हैव क्लियर डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी? अब जीएनपी में व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? जीएनपी में ट्रांसफर इनकम इज नॉट, तो एक मिनट, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी? इट डज नॉट इंक्लूड करंट ट्रांसफर्स. It does not include current transfer. Current transfers are those transfers which are being made without any factors of production involved. जैसे मेरा दोस्त मुझे कुछ पैसे भेज रहा है, he is a non-resident, he is sending me some money, that is current transfer. Or other country, India needs some help, other country is transferring us some money, that is current transfer. उसके बदले हमें कुछ देना नहीं है, कोई factors of production provide नहीं करना है, तो that income is current transfer and that is not included in what? In our national income. Someone was raising hands. वो बच्ची से आप पूछना चाह रहे थे कुछ बेटा? फाइनल, यस बेटा, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. जीडीपी का डेफिनेशन ये दिया है ना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. यस, कुछ भी करो, धंधा करोगे और करोगे. वो जो पैसा देखो, when the money was transferred to you, ठीक है, that money is not part of India's national income. अब उस पैसे को यूज करके आप कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हो, आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, क्या आप कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, है ना? तो वो इंडिया के जीडीपी का पार्ट है. अगर वो पैसा उसने ऐसे भेजा था कि भाई तेरा ही है, आई डोंट वांट इट बैक, तब तो दैट पैसा इज आल्सो ओन्ड बाय यू, दैट इज आल्सो, दैट बिकम्स इंडियाज, that part of India's GNP, that production becomes part of India's GNP, है ना? But the money that got transferred, money that came to India, that is not part of India's. नहीं, उसके देखो, you are confusing between, सर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो that is part of India's GDP, and आप प्रोडक्शन, if you own the factors of production, then that is also part of India's GNP. तो अगर आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट कर दिया तो you own the factor of production, so that is part of India's GNP. जो आप प्रोड्यूस करोगे, that is part of India's GNP. Okay, now, तो GNP is net factor income from abroad or net primary income from rest of the world. एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं, what will be higher, GDP और GNP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा होगा? सॉरी, in general, what will be higher? GDP will be higher or GNP will be higher? It will depend, na? It will depend on net factor income from abroad. Why confusion? देखो, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड. GDP is equal to, नहीं सॉरी, GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. अब मैं पूछ रहा हूं, GDP ज्यादा होगा या GNP? आप बोलो सर net factor income from abroad पॉजिटिव है, तो what will be higher? GNP. Net factor income from abroad negative है, तो what will be higher? GDP will be higher. Right? It will depend. It's not like ये सही है, ये सही है. Yes, कुछ पूछ रहा था कोई बच्चा? नहीं, रेसिडेंट जैसे क्या हो रहा है ना कि हमारे लोग कहीं भी बिजनेसेस फ्रीली चला पा रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल वाटर में शिप्स पे काम हो रहा है, तो दैट इज पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी. ओके, जो चीजें जहां जहां हमारे बिजनेस वैसे फ्रीली मूव कर पा रहे हैं विदाउट एनी आउटसाइड, फ्रीली मींस विदाउट एनी अदर कंट्री सेइंग कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस बिजनेस हियर, और यू आर नॉट अलाउड टू एक्सट्रैक्ट एनी रिसोर्सेज फ्रॉम हियर. अब इंटरनेशनल वाटर में क्या होगा? व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज बाय एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स, जो अलाउड होगा, वो there is no one else coming and saying कि this is my domestic territory, let me do it. हम इंटरनेशनल सिंगापुर से यूएस के बीच में एयरवेज सप्लाई, एयर सर्विसेज दे रहे हैं. अगर आपने एक बस खरीद के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के बीच में सर्विस दे रहे होते,
that will not have been part of India's GDP because it is their domestic territory. Are we getting it? But आप international वाली वो services दे रहे हैं, that is part of India's GDP. Okay, let's come back. So the question was, what is higher, GNP or GDP? आप बोलो सर net factor income from abroad पे depend करेगा. If we are getting more income and giving out less, then GNP will be higher. If we are getting lesser income and giving out more, then our GDP will be higher. Right? ये सबको समझ में आ रहा है? Now, whose growth will be high? अच्छा, what is the situation of India? Do we have net factor income from abroad positive or negative? क्यों? What do you think of net factor income from abroad? कैसे आप जो बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हो कैसे बोल रहे हो? गेस कर रहे हो या कोई डेटा है? अरे इतने कॉन्फिडेंस के साथ सोच रहे हो, कैसे, क्यों सोच रहे हो ऐसा? अच्छा, कैसे? कितने फॉरेनर्स हैं घूमते फिरते दिख जाते हैं तुम्हें? अच्छा, व्हाट इज सेइंग इज कि सर एफडीआई इंडिया में बहुत ज्यादा है, बाहर से इंडिया में एफडीआई ज्यादा है. वो फैक्टर ऑफ इनकम कौन ओन कर रहा है? बाहर वाले लोग ओन कर रहे हैं. तो while business is happening in India, it is part of India's GDP, but factor of income is owned by outsiders. तो net factor eventually income will go to them, and thus his guess is कि सर इंडिया का GNP will be lesser than GDP. ऐसा हमारा एफडीआई बाहर कम होगा when compared to बाहर से पैसा जो इंडिया में आ रहा है. And that may be true. Like we'll have to look at the exact data, but that's a current logic. जो लोग दूसरी तरह से बोल रहे थे वो क्या सोच रहे थे? Export import doesn't have any relation here, beta. We provide a lot of labor outside. देखो, again, we have to understand that if those labor are no more residents of India, that will. हाँ, we provide a lot of resident labor. कहाँ? कौन से हैं ऐसे? जो बाहर जा रहा है नहीं आ रहा वापस. हाँ, अरे बेटा वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना. एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मत घुसाओ यहाँ पे. सोचो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, अब उसके बाद वो एक्सपोर्ट हो गया नहीं हो गया उससे फर्क नहीं पड़ा ना. अगर प्रोड्यूस इंडिया में हो गया, अगर हमारे फैक्टर ऑफ इनकम से प्रोड्यूस हुआ है, इफ इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय आवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, then it is India's GDP, it is part of India's GDP. No matter we export it, we consume it domestically. Right? ये बात समझ में आई है? Okay. Now let's understand one more thing. अच्छा, इसमें भी क्या होगा? This is GNP. इसमें if you subtract depreciation, you will get net national product is equal to GNP minus depreciation. Okay, now let's go to another term, gross net disposable income. Gross net disposable income. Gross national disposable income. Gross national disposable. हमारे पास disposable income is how much money do we have for spending? Dispose करने के लिए how much money do we have? देखो ये yes. हाँ, नहीं कौन सा हायर? इट विल डिपेंड ऑन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या है? नो आइडिया. व्हाई वुड आई रिमेंबर दैट डेटा? है ना. ये मैंने क्या पूछा, मैं ये देखना चाह रहा था कि यू अंडरस्टैंड कि एनीथिंग कैन बी हायर डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिनेरियो इज. ओके, नाउ लेट्स कम बैक. ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. ग्रॉस नेशनल, देखो नेशनल इनकम वाज व्हाट? नेशनल इनकम वाज हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम हमने जनरेट किया, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, हमारे रेसिडेंट्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम हमने जनरेट किया, दैट इज नेशनल इनकम. गॉट इट? बट आवर डिस्पोजेबल इनकम में बी हायर और लोअर बिकॉज अदर देन इनकम दैट वी आर जनरेटिंग फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वी मे बी गेटिंग सम इनकम एज करंट ट्रांसफर. A friend of mine who sends me 1 crore rupees, that 1 crore rupees is not part of my national income, but is it part of my disposable income?
टर्की में लेट्स से अर्थक्वेक occurs and we transfer them some money, has our disposable income reduced? Has our disposable income reduced? National income से disposable थोड़ा पैसा और कम हो गया, जो money that was left was disposable income. National income में और पैसा आ गया, money that was added in our disposable income. तो GDP was all the goods and services produced within the domestic territory. GNP was GDP plus net factor income from abroad, and gross national disposable income is equal to GNP plus net current transfers. जो पैसा हम national income, because it's not coming because of factors of production. It is not coming because of factors of production. This income is coming because of current transfers. So, if you come here, GNI plus net current transfer from rest of the world. कुछ net इसलिए क्योंकि we will be sending some money, we will also be receiving some. So, our disposable income, gross national disposable income will be GNI or gross national income plus net current transfer from. क्या ये बात समझ में आ रही है? Are we able to differentiate between gross national income and gross national disposable income? तो एक रेसिडेंट, एक लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास ग्रीन कार्ड है, अब वो काइंड ऑफ रेसिडेंट, वो एनआरआई है, वो यूएस का रेसिडेंट है, राइट? व्हेन ही ट्रांसफर सम मनी टू हिज फैमिली इन इंडिया, दैट इज पार्ट ऑफ current transfer, and that will increase India's disposable income. That will not increase India's national income. India's national income would have been increased if वो 3 महीने के लिए गया होता and he was still a resident of India. He is going regularly there, working there, getting the money, but he is still a resident of India. तो we will say India के household ने labor provide किया, उसके बदले पैसे आ रहे. But now because he is resident of US, he has become a household of US. When he is producing something that is part of USA's GDP भी उसकी domestic territory में produce कर रहा है. When he is earning income because of factor that is part of India's, or that is part of USA's GNP. But if he sends some of the money to India, India's disposable income goes up. Got it? Okay. Current transfer का फंडा भी समझ में आ गया. Now current transfers can happen in many different ways. मैंने remittance वाला एक mechanism बताया. देखो, now we have understood two kinds of remittances. One, remittance that is occurring because of factors of production. That remittance, will it be included in India's GNP? Yes. A remittance which is occurring not because of factors of production, that will be added in current transfer. That will be part of India's gross national disposable income. हम ना जनरली क्या कर देते हैं, सारे रेमिटेंसेस को नेशनल इनकम मान लेते हैं, वो दैट इज रॉन्ग. नॉट ऑल रेमिटेंसेस आर पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम. नाउ इन ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम we wanted to understand what is current transfer. Net current transfer from abroad is what we are adding in our national income to get gross national disposable income. So what is net current transfer from abroad? तो देखो, it may be taxes on income, wealth, etc. This can be current transfer from abroad. Now let us understand थोड़ा सा current transfer from abroad का ये तीनों का. See what are current transfers? Let's say there is some country जहाँ पे Indian businesses are operating, है ना? There is some country where Indian businesses are operating. तो वो तो factors of production have been provided by India only. उससे जो भी income आ रहा होगा, that will be what? That will be GNP. That will be part of GNP. Now, sometimes what may happen, some countries के साथ हमारा ऐसा agreement होगा कि if your tax rates are less than this, then we may charge a tax over it.
That kind of transfer is not because of any factors of production. गवर्नमेंट बस टैक्स चार्ज कर ले रही है, वो पैसा हमारे पास आ जा रहा है, या फिर यहां पे जो प्रोडक्शन हुआ है वो उसका थोड़ा सा कंपोनेंट बाहर ट्रांसफर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. That will be part of current transfer. This current transfer is not because of any factor of production. ऐसे ही when you pay insurance premium outside the country, or when you get compensation because of that insurance premium, all those things are not part of current transfer, are part of current transfer. तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पैसा भरा यूएस में, पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, बट कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है. दैट इज what current transfer, but money going outside the country. It will reduce our disposable income. But suppose tomorrow you face some accident, they'll pay you, they'll compensate, that insurance company will compensate you for that. That is also part of it. That will increase India's disposable income, and that is also part of current transfer. ऐसे ही there may be other current transfer. Your friend may be transferring you some money, or government may be helping some other country, or we may be helped by some other government. All those things are part of current transfers. Okay, we are clear about GDP, we are clear about GNP, we are clear about gross national disposable income. अब ना GNP में ही आप GNP को जब आप यहां पे आ जाइए, उसमें से डिप्रिसिएशन जो आपने सब्ट्रैक्ट किया था जीएनपी से, यू गॉट नेट नेशनल इनकम. इट इज दिस नेट नेशनल इनकम व्हिच इज it is this net national income that when you divide by population of the country you get per capita income. एक ये पार्ट भी ध्यान रखना. It is not GDP divided by population of the country. It is net national income divided by the population of the country, which gives you per capita income. How do we calculate per capita income? Our net national product divided by total population of the country, that is going to give us per capita income. Per capita income हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए. Now let's come back to GDP पढ़ लिया अपन ने, GNP पढ़ लिया, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ लिया. नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जस्ट रिमूव डिप्रिसिएशन. ग्रॉस से डिप्रिसिएशन हटाओगे, यू विल गो टू नेट. जस्ट गिव मी 1 second, लेट मी फिनिश दिस. Now let's come to gross national income of household. What is gross national income of household? Let's understand this. देखो, we understand gross national disposable income. GDP, all the production or all the income happening within the territory of country, that is GDP, or GDI भी बोल दो, gross domestic production or gross domestic income. Gross national product क्या है? Factor income from, net factor income from abroad added here. Gross national disposable income, net current transfer from abroad added in GNP. This is eventually all the money, all the income that the entire country has generated. But in the country there is household, there is household sector, there is government sector, and there is business sector. तीन सेक्टर है, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर. डिस्पोजेबल इनकम की जब हमने बात करी, दैट वाज ऑल द डिस्पोजेबल इनकम कमिंग टू द कंट्री. नॉट ऑल ऑफ इट विल गो टू हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड के पास कितना पैसा रहेगा? द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ हाउसहोल्ड, ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउसहोल्ड. ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउसहोल्ड will be our total gross national disposable income minus जो पैसा गवर्नमेंट के पास रह गया, माइनस जो पैसा बिजनेसेस में है. राइट? तो इफ यू कम हियर, gross disposable income of household can be arrived from gross national disposable income by deducting gross disposable income of government and gross saving of all businesses. तो gross disposable income of household is gross national disposable income minus gross disposable income of government minus gross saving of all corporations. यहां तक सब क्लियर है? पक्का सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? हाउसहोल्ड्स के पास व्हाट इज द डिस्पोजेबल इनकम? हाउसहोल्ड के पास डिस्पोजेबल इनकम विल बी जो
all the money, all the income generated by the factors of production plus current transfer, ये हमारा हो गया disposable income. But of this disposable income, some may have gone to government in the form of taxes. Some may not have reached household. Businesses ने बचा के रख लिया अपने पास. Savings of corporations. Like when a business makes money, all the money does not go back in the form of land or rent, income, etc. Some they keep with themselves only for further investment. So all the savings which corporations have, all the income which government have, when you subtract all this from gross national disposable income, what do you get? Households के पास कितना पैसा बच गया है. Okay, तो this is the overall summary. एक पिक्चर अपने दिमाग में सेट कर लो. Keep on revising it, keep on revising it. GDP, market value of all the final goods and services produced within the domestic territory. GNP, GDP plus net factor income from abroad. Net इसलिए factor income from abroad minus factor income from India going abroad because those factors of production were owned by foreigners. ये बात समझ में आ रही है? तो GNP was GDP plus net factor income from abroad. उसके बाद हमारे disposable income. Gross national disposable income is equal to GNP plus net current transfer from abroad. Current transfers are occurring not because of any factors of production. GNP plus current transfers from abroad. ये हो गया अपना disposable income. But this is not the income which is coming to household. This was the total national disposable income. Household के पास कितना आ पा रहा है? Total में से the money that is left with government, the money that is left with businesses. उसके बाद the money that is left, that is the income of households. क्या ये सारे concepts एकदम crystal clear हैं सबको? Is everyone very comfortable with it? कोई issue challenge नहीं है. एक बार मन में फिर सोच लो. Someone was asking something. आप हाथ उठा रहे थे. इसमें जो करंट ट्रांसफर रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स, हाँ रेसिडेंट्स ना बेटा, नॉन रेसिडेंट का नेट है ना, वो नॉन रेसिडेंट निकाला भी गया ना. देखो आप किसकी बात कर रहे हो? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की. आप देखिए वहां पे नेट लिखा होगा बेटा. ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम GNI प्लस नेट. नेट मतलब हमें जो मिला प्लस हमें जो देना पड़ा. जैसे अपन ने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में 1 - 2 किया था ना, 2 - 1 1 - 2 जो भी किया था, हमें जो रिसीव हुआ माइनस हमें जो देना पड़ा. लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर टू एक्सप्लेन यू. लेट्स से आवर ग्रॉस नेशनल इनकम इज 100 crores. सिंप्लीफाई करने के लिए आवर GNI is 100 crores. It means our residents own some factors of production. उस factors of production की वजह से कितना income generate हुआ, that is 100 crores, right? Then from our country we may have made some current transfer outside. जैसे मेरा दोस्त US में रह रहा है and he is like, भाई थोड़ी दिक्कत है, पैसे ट्रांसफर कर दे. I transferred him 1 crore rupees. ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम से कम भी हुआ ना. इज इट फैक्टर इनकम और करंट ट्रांसफर? करंट ट्रांसफर है ना. ऐसे ही लेट्स से सम अदर फ्रेंड हैज सेंड सम मनी टू हिज पेरेंट्स, दे हैव ट्रांसफर्ड 2 crore rupees. तो व्हाट विल बी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम? इट विल बी GNI प्लस 2 crore माइनस 1 crore. ये सब्ट्रैक्ट किया ना, नेट करंट ट्रांसफर. नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता, सिर्फ ये जो पैसा आ गया. नेट करंट ट्रांसफर बोल रहे हैं तो जो पैसा गया वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. नाउ इज इट क्लियर? रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट दोनों का करंट ट्रांसफर जो करें. बेटा प्लीज समझिए, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं रेसिडेंट, जो बाहर रह रहे हैं नॉन रेसिडेंट, है ना. अब
जब हमने नॉन रेजिडेंट को पैसा भेजा उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब रेजिडेंट ने पैसा रिसीव किया उसे ऐड करना पड़ेगा। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों को कर रहे हैं, बट रेजिडेंट वाला ऐड हो रहा है बिकॉज मनी इज कमिंग टू इंडिया, नॉन रेजिडेंट वाला सब्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज मनी इज गोइंग आउटसाइड इंडिया, राइट? ओके, इस ऑल दीज टर्म्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ अस। रेमिटेंसेस सारे ग्रॉस नेशनल इनकम में नहीं डालने हैं, बहुत ध्यान से रखना है इसे। यहां पे ना सबने गलती करी है। We have to be very crystal clear कि remittances which are coming because of factors of production that is going to national income. Remittances which are happening because of current transfers will go to disposable income, not in our national income. All of us are comfortable here? Okay. Now, we'll go to various methods of measuring GDP, but अब पहले जो हमारे basic concepts वाला section रह गया है, let us finish that because वहां पे we'll understand various cycles by which we will come to understanding various methods of measuring GDP and all. So let's go to our basics. अब पहले basics वाला सारा खत्म करेंगे and then we'll come to this section. Okay. Now the first part where I was teaching about, where I was talking about final goods, intermediate goods, उसपे ना UPSC have not asked questions on these topics. UPSC has not asked questions. The circular flow of income जो अब सब हम पढ़ने जा रहे हैं, but all those things are needed to understand कि expenditure method, income method, production method, why those methods of calculating GDP will be same, or why they will give the same number, why GDP calculation by production method is equal to GDP production by income method is equal to GDP production by expenditure method. वो सारी चीजें समझने के लिए तो थोड़ा थोड़ा इन सारी चीजों को समझो. Moreover, while UPSC have not asked these questions, but we have seen in recent years some trend is changing. जैसे last year they asked a question on इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में. अब UPSC did not used to ask these kind of questions. In last 10 years, they never asked these kind of questions, but they are asking these basic areas also. अगर NCERT में दिया हुआ है, we should be prepared. NCERT में कहीं भी ये चीजें mentioned है, we should be prepared. We should not think of अरे UPSC इस तरह के सवाल नहीं पूछ रहा है, तो NCERT पूरा prepared होना चाहिए. Other than that, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पूछा है या नहीं पूछा है, उसके बेसिस पे पढ़ेंगे. ओके, तो we have understood final goods. Final goods was what? Anything consumed by household and businesses consuming goods which are not going to be further processed or serviced. Those are final goods. Intermediate goods are going to be further processed, assembled or serviced. Those are intermediate goods. अब the same good may be final good, same good may be intermediate good. Onion is final good when household is buying it. Onion is intermediate good when our favorite omelette wala is buying it. Right? This TV is final good when household is buying it. It's final good when LevelUp IAS has bought it. Is intermediate good when Chroma Store has bought it. Wholesaler ने retailer को खरीदा, अब retailer is further going to add the sale service to it and then sell it ahead. So it is what? Intermediate good. So final goods, intermediate goods का meaning depends on where in the overall cycle it is. This may be a ये मैंने अपने घर के लिए खरीदा final good, ये मैंने ऑफिस के लिए खरीदा. Is it getting consumed? No. Is it getting processed further? इसको बस मैं यूज कर रहा हूं. This is a final good. But suppose I had a shop, I bought it and then मैंने 10% प्राइस बढ़ा के इसे आगे कस्टमर को बेचा. I added some service to it, sales service. This was a intermediate good. We have that understanding now. Same good may be final, intermediate. ठीक है. Purchase of display screen always means purchase of a final good. Do you agree?
अभी यही एग्जांपल दे दिया कि व्हेन क्रोमा इज बाइंग इट, इट इज इंटरमीडिएट. कौन सी सर्विस? हाँ, अरे देखो, अब हाउस होल्ड में मम्मी बहुत काम कर रही है, ठीक है, बट हमारा कन्वेंशन क्या है, हाउस होल्ड में जो चीज चली गई वो फाइनल गुड्स है. बस बस ये रुक जाओ, यही रूल है. एनीथिंग बॉट बाय हाउस होल्ड फाइनल हो गया, दैट्स इट. ठीक है, अब उसमें नहीं जाना है कि सर उसमें और भी तो वैल्यू ऐड हो रहा है, आप चावल कच्चा थोड़ी खा लोगे, चावल को पकाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, एग्री, उसमें उसका क्या बनाएगा, पुलाव बनाया जाएगा, पनीर डाला जाएगा, मटर डाला जाएगा, तब वो फाइनल गुड बन रहा. नहीं, एनीथिंग दैट इज टेकन बाय हाउस होल्ड इज फाइनल. ये रूल रख लो. एक क्लास में 3 डाउट अलाउड है. किसका फिर से बताओ? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है वैसा कि मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट हो रहा हो. मॉनेटरी वैल्यू क्रिएट हो रहा जरूरी नहीं है, बट बिजनेस कर रहा हूं. अब बिजनेस, सपोज क्रोमा ने 10% डिस्काउंट पे दिया, जिस रेट पे खरीदा उसी रेट पे आगे भेज दिया. इट डिड नॉट एड एनी सर्विस, बट स्टिल इट वाज अ इंटरमीडिएट. इट डिड नॉट एड एनी मॉनेटरी वैल्यू, बट इट वाज अ इंटरमीडिएट गुड. ठीक है, उस सर्विस के लिए उसने कुछ चार्ज नहीं किया क्रोमा ने, बिकॉज उसे डिस्काउंट देना था, बट स्टिल इट वुड बी अ इंटरमीडिएट गुड. हाउस होल्ड में गया तो फाइनल गुड है, और उसमें केयर इकोनॉमी वाले और केयर सर्विस वाले पॉइंट में नहीं जाना है यहाँ पे. ओके, इफ हाउस होल्ड बॉट समथिंग इट इज फाइनल. ओके, नाउ फाइनल गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. फाइनल गुड कैन बी डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड. कंजम्पशन गुड्स वो वाले हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर ले रहे हैं. कैपिटल गुड्स वो वाले गुड्स है, दे आर फाइनल गुड्स बट दे आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. उनका खुद का प्रोसेसिंग नहीं होगा, बट दे विल बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग फर्दर. एक मशीन है, इट इज यूज्ड टू डू सम मैन्युफैक्चरिंग. दिस मशीन इज नॉट फर्दर गेटिंग प्रोसेस्ड, बट इट इज डूइंग सम प्रोसेसिंग. ये टीवी है, दिस टीवी इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज, बट इट इज हेल्पिंग मी प्रोवाइड सम सर्विसेज. दीज आर व्हाट? कैपिटल गुड्स. बात समझ में आई? तो कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स आर आइटम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू सैटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल. कंजम्पशन गुड्स को हम इस कैटेगरीज में डाल सकते हैं: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. देखो यहाँ पे व्हाइल टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन गुड्स, सर्विसेज आर आल्सो बीइंग इंक्लूडेड, प्लीज नोट इट. When we are using the term consumption goods, we are ensuring that all the goods and services which are consumed by end users are consumption goods. So, durable consumption goods में we have TV, car, etc. Now, please understand, household जब TV खरीद रहा है, it is a consumption good. Household जब car खरीद रहा है, it is a consumption good. But the same car was being bought by a Ola driver. वो उससे further service provide करेगा, that's a capital good. When the same TV is being bought by LevelUp IAS, it's a capital good. तो यहां पे हम consumption good की बात करें तो consumption good में there will be durable, semi durable, there will be durable consumption good, there will be semi durable consumption good. Durable जो बहुत सालों तक चले, semi durable 6 महीना 1 साल चल रहा हो. It will also be used for longer period but limited time. Then non-durable or single-use consumption good, toothpaste, bread, butter, etc. And services, non-material goods which satisfy human wants, for example, medical services, legal services, house help services. These are also consumption goods. Now, capital goods are known as producer goods. They'll be used for, they're used by businesses to produce other goods and services. They are not used for immediate consumption. Rather, they are fixed assets. ये कैमरा है, this camera is a fixed asset. This is a capital good here. This is a capital good because what? It is being used to provide further services. It is not a raw material. It's not an intermediate good. Please understand. हम जब बात कर रहे हैं consumption good और capital good की, they are both type of final goods. If this camera was bought by a household, it would have been consumption. Final में भी कौन सा?
consumption. If this camera is bought by a business, it is a capital. Because it is this business, it is always business which will be providing more services, more production. Household nahi karega. Okay. So they're fixed assets and are repeatedly used in process of production. They're also of high value. They may be of high value. Building machinery, factories, vehicle used for business purpose. They're used by producers either for replacement of the capital stock or addition of the capital stock. So जो capital goods है, देखो, what may happen is this camera may have a life of 5 years, 10 years. Now, I may buy a new camera that will either be used to replace it or it will be used to create one other classroom. And that is what is being said here. Capital good may be used for what? It may be used for replacement of the capital stock or addition of the capital stock. Capital goods are also they also involve depreciation. Their value may reduce over time. Expenditure on capital good is also known as investment expenditure. इसे अच्छे से समझो. अभी हम जीडीपी की बात करेंगे, हम सेविंग रेट्स की बात करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, हम समझेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा होता है. वहां पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी कि when you are making what expenditure on capital goods, that is investment. When you are making expenditure on raw material, that may not be investment. But when you are making expenditure on, जब आप raw material पे investment, जब आप raw material पे expenditure कर रहे हो, that's not increasing your production capacity. आप उस raw material को further process करोगे, final good बनाओगे, उसे बेच दोगे. आपका production capacity किससे बढ़ रहा है? By adding capital goods. This is investment expenditure. So both consumption goods and capital goods are final goods and therefore are used for estimation of national income. Intermediate goods are not used in the estimation of national income because intermediate good eventually तो final good बनेगा ना, वहां पे उसका value वैसे भी add हो गया है. So we do not have to include intermediate goods का भी production in our calculation and then final goods. Else there will be what? It will be counted twice. ऐसे समझो जिस प्लास्टिक से पेन बना था, अब इस प्लास्टिक जब बना है, मैं उसका if I include that in the definition or in the calculation of GDP, and जब ये पेन बना, already that plastic is included here, so there is no need of including that plastic there when we calculate what is the total production in the economy. Okay, now let's come to थोड़ा सा और consumption expenditure को समझते हैं. Various components of consumption expenditure. So in macroeconomic, consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure in the economy. So consumers in an economy are broadly classified as household, government or NGOs. देखो consumers में we are not including businesses. Now you may say कि sir businesses में also be consumers. कैसे? यहाँ पे चाय बनती है ना, हम पीते हैं चाय. इस चाय a final good यहाँ पे in that sense? Yes. Is it a consumption good? Yes. वो थोड़ा सा अभी के लिए ignore कर दो. मतलब that amount is very small. Okay. So let's come back. In macro, consumers in economy are broadly classified as household, government, and NGOs. यहाँ देखो businesses को we have not included in the definition of consumers, and thus consumption good we will for now assume are not being consumed by businesses. Aggregate consumption expenditure क्या होगा? फिर consumption expenditure by household, consumption expenditure by government, consumption expenditure by NGOs. Consumption expenditure by household, consumption expenditure by government, consumption expenditure by NGOs. यहाँ पे हम किसका consumption expenditure नहीं डाल रहे हैं? Businesses का. एक स्क्रीन. Now, investment को थोड़ा सा समझते. Consumption expenditure हमने समझ लिया. Consumption expenditure will be made by household, government or NGOs. वो the consumption expenditure will not be made by businesses. कुछ rules हम लेके चल. Now, investment refers to increase in the stock of capital. Change in the stock of capital is called capital formation. That is, please understand, capital बढ़ाना. If I increase the number of TVs, if I increase the number of building, if I increase the number of cameras, I'm increasing capital. If I increase the number of machines, suppose I have a company which is making industrial gloves and I have 10 machines. If I increase the number of machines, I'm increasing the capital. So investment refers to increase in stock of capital. Please understand it. इसलिए मैंने बोला raw material खरीद रहे हो,
उसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इज रॉ मटेरियल खरीद के, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस इट मोर अनलेस यू हैव इनफ कैपिटल। ओके, तो now investment may be fixed investment or inventory investment. What is fixed investment? Increase in the stock of fixed assets, जैसे plant, machinery, this TV, this camera. If those things increase, what are we saying? Our fixed investment is going up. But there may also be inventory investment. Now, what is inventory investment? Inventory investment is this: कि last year, suppose I'm manufacturing industrial gloves, and I produce a lot of industrial gloves, and that is stored in my godown. That is also an investment because I'll be able to sell it next year, इसी साल फ्यूचर में कभी बेच सकता हूं, तो that is inventory investment. So I could have invested in having more machines, or I could have inventory. So inventory investment refers to increase in inventory, stock or stock of finished goods. अब देखो यहां पे while capital investment की जब हम बात करते हैं, we said कि we will not include raw material. यहां पे raw material may also be considered investment when we are considering inventory investment. यहां पे semi finished goods may also be considered investment when we are considering inventory investment. Okay, तो ग्रॉस, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को समझ लेते हैं। देखो, लेट्स से I have a business where 100 crore rupees का capital is already invested. When I started a business, 100 crore rupees का capital is already invested. Now I want to increase the capital by 20 crore rupees. उससे what would happen? I'll rent more place, I'll buy more machinery, I'll buy more camera, I'll buy more TV, I'll buy more chairs. That is the idea. So this was my capital. This is what? This is investment. So investment will lead to what? Investment will lead to increase in capital. Investment will lead to increase in capital. But capital will not increase by 20 crores. Why? Because इसमें ना कुछ depreciation हुआ होगा. I had invested 100 crore rupees in machines, but some of the machines खराब हो गई होंगी, उनको repair कराना है. So some money from this 20 crore rupees may go there. Some machine has to be replaced altogether. Are we able to understand this? So this is capital, this is investment. But आपको अगर net investment देखना हो कि आपने net कितना add किया है, it will be after removing depreciation. So gross investment refers to total production of capital. Sorry, gross investment refers to total production of capital goods during the year. In a GDP, in a country's total production, आप जो capital goods produce कर रहे हैं, capital goods would be what? Capital goods would be used by businesses for investment purpose. Capital goods would be used by businesses for investment purpose. तो जो, what are we saying? Gross investment refers to the production of capital goods. एक GDP में जितना capital good produce हो रहा है, जितने machines produce हो रहे हैं, जितने tools produce हो रहे हैं, which are not consumption good, that can be considered as gross investment. It may include capital goods used for replacing existing capital goods, or it may be capital goods used as a net addition to the existing capital stock. So my investment will be what? My investment will be what I invest on capital goods. My investment will be what I invest on capital goods. And when I invest it on capital goods, some of the capital goods would be used to replace a camera. मैंने नया कैमरा खरीदा, so it may be used to replace one of the previous cameras, or it may be used for further addition. So gross investment, ये उल्टा लिख दिया क्या? नहीं सही है. तो when I talk about gross, sorry, let me come here. This was my capital, 100 crores ka. This is my 20 crore rupee ka investment. This is my gross investment. What is the total investment that I'm making? But
इस 100 करोड़ रुपीस में लेट्स से 5 करोड़ रुपीस का डिप्रिशिएशन हो गया, तो व्हाट इज द टोटल कैपिटल नाउ दैट आई हैव? यहाँ पे 95 करोड़ बचे प्लस 20 करोड़ दैट आई हैव एडेड, तो टोटल कैपिटल इज 115 करोड़। तो इन अ वे नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 15 करोड़, बिकॉज 5 करोड़ was used for fulfilling the gap that was created by depreciation. So gross investment is 20 crore, but net investment is gross investment minus depreciation. Okay, so come back here. Gross investment is net investment plus depreciation, or net investment is gross investment minus depreciation. Okay. अब depreciation में what are the things involved? It may involve normal wear and tear, it may involve accidental damage, or it may involve technology की वजह से some things becoming obsolete altogether, not needed altogether. All those things may be depreciation. It's also called consumption of fixed capital. Fixed capital is not supposed to be consumed. ये TV is not supposed to be consumed as such कि हर साल थोड़ा थोड़ा consume होता जा रहा है, right? So depreciation is consumption of fixed capital because its value is reducing. Thus, due to depreciation, fixed asset needs to be replaced from time to time. ये कुछ basic concepts. Now देखो, अच्छा आते हैं उस पे. We'll come to how GDP grows. GDP will grow only when there is net investment. If investment is not there, तब तो हमारा production capacity उतना ही रहेगा. If investment is not there, production capacity उतना ही रहेगा next year. Will not be able to increase our GDP. GDP will only grow when there is net investment. Gross investment जितना भी हो, if all that is going for filling the gap created by depreciation, our production capacity would remain same, and that is why investment is crucial, investment is important. आते हैं उस पे, but before we go there, let us understand stocks and flows. ये मैं NCERT पूरा complete करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, so that if UPSC keeps on going into more of non-traditional areas जो उन्होंने पूछे हैं, वो जैसे लास्ट ईयर उन्होंने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इस तरह के सवाल पूछ लिए, हमें तब भी प्रिपेयर्ड रहना है. एंड दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम एनसीईआरटीज. तो विल कम टू द मेन एरिया, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है, बट पहले ये समझ लेते हैं. नाउ स्टॉक्स एंड फ्लो क्या होते हैं? देखो, एनी क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड at a particular point of time is a stock concept. Okay, so a stock is quantity measured at a particular point of time. That is, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है? शैलेश. I ask शैलेश आपके बैंक में कितना पैसा है? बताओ मत. I ask शैलेश आपके बैंक में कितना पैसा है? बैंक में कितना डिपॉजिट है अभी? शैलेश says sir 10 crore rupees. That is a stock. The bank balance is a stock concept, stock quantity, because आप उसे उस पर्टिकुलर टाइम पे बता रहे हैं, है ना? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ फैक्ट्री, नंबर ऑफ लेबरर्स इन अ फैक्ट्री, उस टाइम पे कितने लेबरर्स हैं, दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. अमाउंट ऑफ वाटर इन द वाटर टैंक, दैट इज अ स्टॉक क्वांटिटी. क्या हमें समझ में आ रहा है? व्हाट इज स्टॉक क्वांटिटी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम, स्टॉक क्वांटिटी. अभी इस टाइम पे कितने बच्चे हैं? ओके, तो अ स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. बैंक बैलेंस, वेल्थ, कैपिटल, वाटर इन ओवरहेड टैंक, amount of stored food, number of workers in a company, population of a country, all such values are stock value. But कई चीजें ना हम at a particular point of time के बेसिस पे नहीं बताते, हम उसे बताते हैं with reference to a bigger period. If I ask Shailesh, what is your salary? Shailesh may say, sir, it is 1 lakh rupees. 1 lakh rupees per day, per week, per month, per year. है ना? इन्हें विथ रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड बताना होगा कि दैट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट. व्हेन ही सेज 1 लाख रुपीस अ मंथ, एवरी मंथ 1 लाख रुपीस इज फ्लोइंग टू. इसका बैंक बैलेंस वाज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. सर, आई हैव 10 crore rupees in my bank account. Stock will be impacted by flow. फ्लो ज्यादा है तो स्टॉक बढ़ेगा, बट स्टॉक इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मच मनी यू हैव.
Flow concepts are, flow quantities are those quantities which are आपको with reference to a time period बताना है. तो a stock is a quantity measured at a particular a flow is a quantity measured over a specified period of time. जैसे wages per day या per month, flow of water. Now how much water is there in the tank right now? You may say 1000 liters. Flow में it is getting added by 1 liter per second water is flowing into it. Flow concept. और प्रोडक्शन, अब मैं अगर मैं पूछूं इस कंपनी का प्रोडक्शन कितना है, तो यू विल से इट इज एबल टू प्रोड्यूस 5 कार्स इन अ डे और 150 कार्स इन अ मंथ, राइट, और 30,000 कार्स इन अ ईयर. It is with reference to a period, not at that particular point. That is what? Flow concept. Production. If I had asked how many machines are there in the factory, stock or flow? Machines. उस टाइम कितनी machines है? Stock. Right? How much is the capital of the company? अभी इस कंपनी में कितना इन्वेस्टेड है? स्टॉक. इन्वेस्टमेंट इज मैं हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं हर साल कितना इन्वेस्टमेंट कर. इन्वेस्टमेंट इज फ्लो. नाउ इफ वी डू नॉट डिफरेंशिएट इट प्रॉपर्ली, यू में से सर मैंने इस कंपनी में 100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है, वो तो स्टॉक हो गया ना. यस, तो समझो उसे हम कैपिटल बोलेंगे. जो स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट है उसे हम कैपिटल बोलेंगे. एंड द मनी दैट इज फ्लोइंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट. ओके, तो wages, flow of water, capital formation. Capital is stock, capital formation is flow. Interest on capital. Interest on capital आप ऐसे बोलते हो ना, I'm getting 7% per year. I'm getting 7% per year. That is a flow concept. Sale. Sale, you do not, if you go to a shop and ask, what is your sale? That person will say, my sale is 1,000 rupees a day, right? Or 30,000 rupees a month, or 3.6 lakh rupees a year. So sale is a flow concept. I hope we are getting it. We are able to understand this. Then number of birth, like आप country का population कितना है, that is a stock concept. Birth rate कितना है, flow concept. Death rate कितना है, flow concept. Okay, so flow impacts the stock. कैसे? If Shailesh has higher salary per month, can his bank balance increase? Yes. So flow impacts the stock. Example, greater the salary, more would be the bank balance. Stock can also impact the flow. For example, जितना ज्यादा capital है, जितना ज्यादा उनका वो उतना ज्यादा interest earning हो सकती है. What is your interest earning per month? My interest earning per month is dependent on how much fixed deposit I have, how much is your how many cars you are producing. That is flow concept, but that will depend on how much capital you have, how much machines you have. That is a stock concept. So they may be dependent on each other, but these two things are different. अब इसको ना थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेते हैं. कैपिटल, इज इट अ स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट? कैपिटल स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट फ्लो है, उसे याद ध्यान रखना है. Sometimes we may confuse between capital and investment. Monetary expenditure. Flow expenditure की जब भी आप बात करोगे, कैसे करोगे? एक दिन में इतना स्पेंड करता हूं मैं, है ना? एक्सपेंडिचर. इफ माय फादर टेल्स मी, बेटा तेरा एक्सपेंडिचर क्या है, मैं बोलूं पापा 50,000 रुपीज. पापा विल बी लाइक 50,000 रुपीज क्या? पर डे, पर मंथ, पर ईयर, व्हाट? It will be not at a particular point of time. It will be with reference to time. जब भी कोई डाउट आए, जैसे when I asked you expenditure, आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला, बाकी लोग शांत हो गए. जब भी you have a doubt, think इसे मैं with reference to period बोलूंगा या इसे मैं with at a particular point of time बोलूंगा. तो expenditure is what? Flow or stock? Flow. Okay. A 100 rupee note. 100 rupee note will be a stock, है ना? 100 रुपी नोट ये है, ये स्टॉक हो गया. इसमें क्या फ्लो है? 100 रुपीज नोट पर मंथ नहीं. 100 रुपी नोट एज सच इज अ कैपिटल विच इज स्टॉक. अ फैमिलीज कंजम्पशन ऑफ मिल्क,
If I ask a family what is your consumption of milk, they'll have to refer it with respect to a period. सर्विस ऑफ अ ड्राइवर, सर्विस ऑफ ड्राइवर है ना, फ्लो होगा। क्यों? पर डे, पर मंथ, पर ईयर। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, हाउ मच सीमेंट आर वी एबल टू प्रोड्यूस इन अ डे, इन अ मंथ, विद रिस्पेक्ट टू अ पीरियड। मशीनरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी, स्टॉक। अब देखो, फ्लो स्टॉक पे यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, बट एनसीईआरटी में ये डिटेल में डिस्कस है, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है। बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इट टुक अस परहैप्स 10 minutes, but when we'll go into the examination hall, we'll have this confident. If I'm not able to answer something, जब तो वो एनसीईआरटी में भी दिया नहीं है, मैंने भी पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, no one will be able to answer it. But if we are not prepared with NCERTs and all, we go into self doubt. यार मैंने ये नहीं पढ़ा, शायद उससे पूछ लिया सब आंसर कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम, पता है करण सर एक बात बोलते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज आल्सो पर्सनालिटी टेस्ट। व्हाई पर्सनालिटी टेस्ट? आप कितना काम तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो विल डिसाइड वेदर यू आर गेटिंग सिलेक्टेड और। वाइल बहुत सारे एफर्ट्स, नॉलेज सही होंगी, बट ऐसा भी नहीं है आपने पहले 5 क्वेश्चन देखे और अब घबरा गए, you will ruin your paper. Even the paper, you had to make only 60 questions right. In order to get selected, you had to make only 60 questions right. पहले 10 आपको नहीं आते थे या 10 के 10 आपको लगते हैं गलत है, फिर भी आप कॉन्फिडेंट रह पाओ तो आप सेलेक्ट होगे। पहले 10 क्वेश्चन गलत हो गए, उसके बाद आप परेशान हो, तो आप परेशान कब नहीं रहोगे? When you are very well prepared, when you feel like एनसीईआरटी से कुछ भी पूछे तब भी मुझे आता है, बेसिक बुक से कुछ भी पूछे तब भी मुझे आता है, करंट अफेयर्स से कुछ भी पूछे तब भी मुझे आता है, उसके बाद भी कुछ है जो पूछ रहे हैं मुझे नहीं आता, नॉट इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आई हैव कवर्ड एवरी डायमेंशन। ओके, नाउ एक बार बिफोर आई गो अहेड, मेरे को ना आज मैंने गलती कर दी, मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों से बात ही नहीं करी है, और मुझे ब्रेक की बात हुई थी क्या? नहीं हुई थी ना? एक सेकंड, जस्ट मेरे को ऑनलाइन बच्चों के डाउट्स देख लेने दो, इनके बहुत सारे डाउट्स हैं। आई एम सॉरी गाइस, आई विल मेक श्योर दैट फ्रॉम टुमारो आई विल बी इंश्योरिंग कि हर 10 मिनट में मैं देख रहा हूं। Sir, I have been following Vivek Singh sir's book since last 2 years. Is it all right to continue with alongside these classes? Yes, definitely. कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Something that you have been following, if you have some book, keep it with you. जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला, शंकर गणेश भी किस लिए बोला? आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। It will not be needed for your preparation. I'll make sure that every relevant thing is part of your note. Sir, is import included in GNPA? बेटा देखो, जब हम नेशनल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सोचो एक बार, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें कहां से आ गया? जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कहां हुआ होगा? किसी और कंट्री में प्रोड्यूस हुआ होगा, है ना? तो प्लीज समझिए, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया ओन्ड है, देन इट्स पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। इट डजंट मैटर वेदर वो आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इट हैज नो रिलेशन विद दैट। एक्चुअली आपका प्रॉब्लम पता है कहां से पे आता है? व्हेन यू गो टू एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, एंड वहां पे हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला उसे समझते हैं, वहां पे भी ना वी आर गोइंग देयर बाय प्रोडक्शन मेथड, वी आर रीचिंग देयर बाय द प्रोडक्शन मैकेनिज्म, प्रोडक्शन मेथड। अभी आते हैं, नहीं स्वाति देखो, शिवम ने एक क्वेश्चन पूछा था, सर इज इंपोर्ट इंक्लूडेड इन जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एंड स्वाति ने आंसर किया यस, एक्सपोर्ट्स आर एडेड एंड इंपोर्ट्स आर सबट्रैक्टेड। फॉरेन, तो दिस इज रॉन्ग। व्हेन वी आर गोइंग बाय कंजम्पशन मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, उस मेथड में हम बोलते हैं C प्लस G प्लस I प्लस N माइनस एक्स, बट वो हम इसलिए कर रहे हैं आखिरी में N माइनस एक्स बिकॉज हमने C में इंपोर्टेड चीजें ऑलरेडी इंक्लूड कर दी है। अभी आई डू नॉट वांट टू गो इनटू दिस, आई विल गो टू दैट कॉन्सेप्ट आराम से, सो दैट यू अंडरस्टैंड। बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जीडीपी से कोई रिलेशन नहीं है, प्लीज समझिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेट करने जाएंगे तो उसमें फॉर्मूले में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि व्हेन वी सेड कंजम्पशन, व्हाई आर वी सबट्रैक्टिंग इंपोर्ट देयर? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर रहे हैं ना,
बिकॉज जब हमने कंजम्पशन सी लिखा है, सी में हमने डोमेस्टिक चीज जो कंज्यूम करी है प्लस फॉरेन चीज जो कंज्यूम करी है, सी में दोनों इंक्लूड कर लिया। तो फॉरेन चीज जो कंज्यूम करी है वो तो इंडिया ने प्रोड्यूस नहीं करी थी ना, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहां पे। ओके, इसीलिए अभी उसमें नहीं जाते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड, डू नॉट कंफ्यूज जीडीपी जीएनपी कॉन्सेप्ट विथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो एक्सटर्नल सेक्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं। GDP is any production that happened within your domestic territory. अब वो एक्सपोर्ट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। If that production has happened in your territory, that is your GDP. अब वैसे सोचो, GNP आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो भी प्रोड्यूस हुआ, रेसिडेंट्स के फैक्टर, the production that happened because of residents factor of production, that is GNP. Now suppose I have a factory in US, factor of production किसने दिया? मैंने दिया, रेसिडेंट ने दिया। तो उस फैक्ट्री से जो इनकम आ रही है इस पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी, इस पार्ट ऑफ, अब वो चाहे एक्सपोर्ट हुआ इंपोर्ट हुआ कोई फर्क, कोई रिलेशन ही नहीं। दैट फैक्ट्री, डिड इट इंपोर्ट समथिंग टू इंडिया, डिड इट एक्सपोर्ट समथिंग टू इंडिया, डिड इट इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम इंडिया, इट हैज नो रिलेशन। ओके, अभी विल कम टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाली चीज, वो समझेंगे वहां पे कैसे आ रहे हैं, बट इट हैज नो रिलेशन विथ, इट हैज नो रिलेशन मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिपेंडेंटली हैज नो रिलेशन विथ जीडीपी। गॉट इट? जो हमने समझा है जीडीपी, प्रोडक्शन दैट इज हैपनिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सर वो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो गया तो क्या हुआ? हमें तो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो गया ना, दैट इज जीडीपी। एक्सपोर्ट हुआ या नहीं हुआ क्या फर्क पड़ेगा? अब एक लेट्स कंसीडर सिनेरियो जो इस बच्चे ने बताया, क्यों वो गड़बड़ कर दिया, ऐसे समझो। सपोज इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी we produced goods worth 100 crore rupees. In our domestic territory, we produced goods worth 100 crore rupees. Fine. Ab we are also importing goods worth 10 crore rupees and exporting goods worth 2 crore rupees. हमारा GDP कितना है? 100 crores. The production that has happened in our domestic territory is our GDP. It has no relation with import export. बात समझ में आई? Does it have any relation with import export? No. क्या मैं अपना जीडीपी बोल दूंगा कि ये ऐड कर दो सबका? नहीं। जीडीपी is whatever production has happened. It doesn't matter whether it has been exported or not. Got it? तो अभी we'll understand C plus G plus I plus NX वाला thing. How do we reach there and what is the meaning of it? इससे I think this will help you clear कि export import has no relation with GDP. Depends on NFI, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Net factor income of from abroad, ये सब कुछ नहीं है। चलिए, स्वाति is asking, government giving old age pension as social security is considered as transfer payment but services। देखो, अब प्लीज अंडरस्टैंड, हमने ट्रांसफर पेमेंट की बात करी थी, उसमें भी इंक्लूडेड नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड या नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। तो व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग सम पेंशन टू एल्डरली पर्सन लिविंग इन इंडिया ओनली, इट हैज नथिंग टू डू विथ करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। बट बाहर की गवर्नमेंट यहां पे कुछ पैसे भेज रही है। सपोज आई लिव्ड इन यूएस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम and I contributed in the PF fund there, old age pension fund there. But after working for 30 years, I realized कि यार हरियाणा में ही जाके सेटल होना है, खेतों के बीच में, तुम्हारे आसपास नहीं, तुम डेंजरस लोग हो, है ना? वैसे खुश हो गया, हाँ सर, तो हरियाणा में ही जाके सेटल होना है, खेतों के बीच में एक अच्छा सा घर बना के, दैट इज हाउ आई वांट टू रिटायर। बट आई हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओल्ड एज पेंशन थ्रू आउट माई लाइफ देयर, तो मुझे पेंशन मिलता रहेगा अभी। तो व्हेन दैट मनी इज कमिंग टू इंडिया, इज दैट बिकॉज ऑफ सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? नहीं, दैट मनी इज नॉट बिकॉज ऑफ, क्या मैंने अभी वहां पे कोई लैंड लेबर कैपिटल कुछ डाला हुआ है? नहीं, दैट विल बी पार्ट ऑफ करेंट ट्रांसफर।
दैट विल, तो यूएस से पैसा इंडिया में आ रहा है दैट विल बी इंक्लूडेड, जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है दैट विल बी एक्सक्लूडेड, राइट। बट जो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेसिडेंट को ही पैसा दे रही है, इट हैज नथिंग टू डू विथ current transfer from abroad, net current transfer from abroad, that will not be considered. Okay. Sorry. Danish, Ashra is saying gross disposable income of household समझ में नहीं आया। दनिश अब समझ में आ गया, लाइक उस टाइम नहीं आया हूँ। Sir, which of these is considered national income and to calculate per capita income? Gross national disposable income. अरे national income is what? Net national income. और per capita income calculate करने के लिए net national income divided by total population. बताते हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। सर इफ यू कैन गेट टू गिव होल इकोनॉमी नोट्स एट वंस, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है सर इफ यू कैन गिव होल इकोनॉमी नोट्स एट वंस इट विल बी गुड। अब प्लीज समझो, अगर मैं वो कर दूं, मैं कर सकता हूं, मैंने अभी जीएस फाउंडेशन में सारा पढ़ाया है, बट देन ओवर द नेक्स्ट 20 डेज, आपकी नेक्स्ट 20 डेज तक इकोनॉमी की क्लासेस चलेंगी, आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ अपडेट्स इन देम, वो सब आपको नहीं मिलेगा, फिर आप क्लास में बैठ के उसे ऐड कर रहे होगे, वो प्रॉब्लम होगी। इट्स बेटर वी टेक इट वन बाय वन। एंड व्हाट व्हाई सारे नोट्स एक साथ क्यों चाहिए? मैं कल रात में 3 बजे तक इन्हें अपडेट कर रहा था। These notes are slightly different from what I was teaching in December in GS Foundation. Slightly different. कल अपडेट कर रहा था ना, जो लेटेस्ट नवंबर में गवर्नमेंट के डेटा आए हैं उनसे अपडेट कर रहा था मैं इसे, राइट। तो डोंट आस्क फॉर कि सारे नोट्स एक साथ दे दो। अब मैं साइंस के आपको सारे नोट्स एक साथ दे सकता हूं, पर 20 दिन में मैं खुद भी तो कुछ काम करूंगा, वो सब भी मिलना चाहिए। ओके सर, एक बच्ची का डाउट है सर, इज इट करेक्ट टू से दैट हायर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू हायर जीडीपी, एज हायर डिस्पोजेबल इनकम विल जनरेट मोर डिमांड? हाँ ठीक है, मोर डिस्पोजेबल इनकम विल लीड टू more demand or more investment may also happen, those kind of things may happen, fine. Okay, let's now come to क्या ब्रेक सही है, 15 मिनट पढ़ देते हैं फिर दे देंगे, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हमने पढ़ाई हुआ है ना, ये फिर खत्म हो जाएगा, फिर विल बी कमिंग टू कोर पार्ट। यस, 1 मिनट दे दीजिए मुझे। हाँ पूछिए। यस, वाटर, अभी पानी की टंकी में कितना पानी है? अरे अभी कितना पानी है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? हाँ, अभी कितने वर्कर्स हैं, कितने हायर हो रहे हैं, कितने फायर हो रहे हैं, दैट इज फ्लो, बट राइट नाउ हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर? इट कैन चेंज, यस, दैट इज व्हाई वी आर मेजरिंग इट एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगले दिन वी मे फायर सम पीपल एंड नंबर में रिड्यूस टू 98, अभी 100 वर्कर्स हैं, tomorrow the number may go down to 98, but at this point of time how many workers we have? 98. That is what? Stock concept. How many workers are you firing every day on an average? 2 workers every day. Flow concept. How many workers do you have on Tuesday? Stock.
उस दिन, उस टाइम पे 98 वर्कर्स। नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा सा सोचोगे तो आ जाएगा। बेटा अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक, व्हाई विल यू डिटरमाइन इन अ डे? उस दिन कितना पानी था उसमें, तो इल से उस दिन 1000 लीटर पानी था, उस दिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 1000 लीटर पानी। हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग इनटू इट, हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग इनटू इट, तो यू विल से every minute 5 liters of water is getting added, that is 5 liter per minute is flow. What is the amount of water right now? That is stock. ऐसे समझो ना इनका बैंक बैलेंस, शैलेश का बैंक बैलेंस था 10 crore rupees, राहुल का शैलेश का बैंक बैलेंस था 10 crore rupees, राइट? अभी कितना बैंक बैलेंस है? 10 crore. नाउ यू आर सेइंग कि सर वो तो इसकी सैलरी के साथ ऐड होता रहेगा। सैलरी इज पर मंथ कितनी सैलरी आ रही है, दैट इज फ्लो, बट व्हाट इज द बैंक बैलेंस? 10 crores टुडे इज स्टॉक, नेक्स्ट मंथ इट मे गो टू 10 crore 1 lakh, that is stock. 10 crore 2 lakh, that is still stock. How much is the money flowing into the bank account? 1 lakh rupees per month, 1 lakh rupees per month, that is flow. How much of water is flowing into the tank? 1 liter per second, that is flow. How much water is there in it? 100 liters, 101 liters, 102 liters. बढ़ रहा होगा बट वो स्टॉक, बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पूछ रहे हो। गॉट इट? Okay, now Kaushal is saying, sir, your handouts has 54 pages, we have only 38 pages. बेटा वो फॉर्मेट साइलेंस साइलेंस फॉन्ट साइज बड़ा है ना डिस्प्ले के लिए। इन योर हैंडआउट फॉन्ट साइज 12 है, डिस्प्ले के लिए आई मेक इट 16। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं चीटिंग नहीं कर रहा, देयर इज नथिंग डिफरेंट। ओके, लेट्स कम टू हाँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी वो हमने पढ़ लिया है। लेट्स नाउ कम टू, अच्छा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाँ फैक्टर पढ़ लिया, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हाँ इसको भी ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वी डिवाइड इकोनॉमी इनटू 4 सेक्टर्स, वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, अदर इज बिजनेस सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट। देखो हाउस होल्ड सेक्टर इज कंजम्पशन सेक्टर, हमने बोला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन कर रहा है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एनजीओस, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे थे, है ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर इज द प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। एक इकोनॉमी को ट्रेडिशनली विल डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। हाउस होल्ड सेक्टर विल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, तो ऑल 140 crore plus people in India, they are part of household sector, right? तो मुकेश अंबानी is an individual part of household sector. Reliance Industry is the business, जहां पे मुकेश अंबानी is working as a CEO, उन्हें वेज मिल रहा है उसका, is also the entrepreneur. मुकेश अंबानी's household has provided entrepreneurship to the business, उसके लिए प्रॉफिट मिल रहा है मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी में have also provided capital there, कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, राइट। तो it represents the individual, consumer and families within the economy, and all 140 crore plus population residing in India will constitute India's household sector. They are consumers of goods and services. They are what? They are consumers and they are also owners of factors of production. So they receive labor के बदले wage, land के बदले rent, capital for capital that they contribute, because they are owner of the capital that they contribute, businesses give them interest, and for entrepreneurship they get profit. They use this income to purchase goods and services for personal consumption, because they are consumers, they will make consumption expenditures. Now business sector is the producing sector, so they include businesses, firms involved in production of goods and services and owned by private individuals. They include manufacturing units, service providers and all other types of, और सारे businesses यहीं पे हैं।
ऑमलेट बनाने वाला से लेकर अचार बनाने वाला. Space tourism, rickshaw puller, all those businesses are included here. They are the ones who create jobs and contribute to economic growth. For production purpose, the firms hire purchase factors of production. So these firms, these businesses, they'll be hiring or they'll be purchasing. They may purchase some factors of production. So land, labor, capital, entrepreneurship, they may be purchasing it from household. यहाँ पे मैंने example दिया कि Reliance Industries is a business. Mukesh Ambani is part of the household sector. A PSU is part of government sector, but employees of PSU are part of household sector. Government sector, so government at all levels, be it at the central government level, state government level, local government level, is included here. They collect revenue through taxes, fees, etc. That is how they will get some income, and they fund public goods and services such as infrastructure, education, healthcare. Government sector may act as both as welfare agency as well as a producer. PSUs में production होता है, so they may be also making production, but in most of our calculation we will primarily give the responsibility of production to businesses. जब government PSUs जब business की तरह काम कर रहे हैं, हम ऐसे मान लेंगे कि वो business में हमने वो consider कर लिया है. External sector, this sector represents economic interaction with the rest of the world, including the import and exports of goods and services. This external sector will be importing, exporting goods and services, or capital may also be imported, exported. Like FDIs may come from India, FDIs may go out of India. So external sector से ऐसे interaction हो सकता है. तो in an economy there are 4 sectors: household, business, government, and external sector. Household sector, consumption and owners of factors of production. Business sector, producers, and they will produce, and because they took factors of production from household, they'll be giving them wages, rent, interest, profit, etc. Government may run some welfare activities. उसके लिए उस government, where will government be getting its money? It will primarily be getting its money through interest, taxes, etc. And where will government be spending its money? Infrastructure, welfare, etc. And some section of government may also be the producer section. उसे generally हम business में डाल के in our calculations, in our assumptions, will primarily include them in businesses. And then there is external sector. Our economy may interact with outside world through export of goods and services, through import of goods and services, through export of capital, through import of capital, through export of factors of production, through imports of factors of production. Okay. Intersectoral flow. अब intersectoral flow समझने के लिए ना, देखो, पहले to simplify things, let us consider only 2 sectors: household sector and business sector. We'll understand we'll include all the 4 sectors eventually. We'll have household sector, we'll have business sector, we'll have government sector, we have external sector. हम वहां पे उस complexity में पहुंचेंगे, but एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो फ्लो हो रहा है, it can happen either in the form of goods and services, it can happen in the form of money. Okay, so the household sector depends on business sector for supply of goods and services needed for consumption. Businesses will supply them goods and services. Household sector को, please understand, goods and services are being produced by businesses. When a farmer is working in the field, वो अपना business run कर रहा है, वो अपना producing sector है, वो producer sector है. Please understand, it's not household sector. Okay, the producer sector, business sector depends on household sector for supply of factors of production. Who owns factors of production? Household. So they will be getting in return of that wages, rent, etc. from this sector. Government sector depends on household sector and business sector for tax and non-tax revenue, and producer and household sector depends on government for administrative service, law and order, defense, etc. Intersectoral dependence leads to intersectoral flow because they are dependent on each other. There will be flow of money, flow of goods, flow of services, flow of factors of production. Those things would be there. So household sector supplies factor services, land, labor, capital, entrepreneurship to producer sector, and producer sector supplies goods and services to household sector. देखो यहाँ पे हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? This is called real flow. Intersectoral flow in the form of money is called money flow, and intersectoral flow in the form of goods and services is called
रियल फ्लो। अब पता है आज से 2 साल पहले, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर, कुछ वैसा क्वेश्चन आया था। उसमें ना आपको बताना चाहिए बैंकिंग सेक्टर एक्सेट्रा जो मनी वगैरह सप्लाई कर रहे हैं ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। प्लीज समझिए यहाँ पे इस क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। रियल फ्लो का पार्ट क्या होगा? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी फ्लो, जैसे wages, rent, profit, money will be flowing from businesses to household. When households are buying some things, buying goods and services, they'll be paying money to businesses. This flow is what? Money flow. What is real flow? Real flow में we don't include money flow. Real flow में household provided me land, labor, capital, entrepreneurship. Businesses provided me goods, services. That is real flow. Money flow, real flow, दोनों बात समझ में आई? तो intersectoral flow in the form of money is known as money flow, and intersectoral flow in the form of goods and services is known as real flow. तो real flow का example ये देखिए, this is an example of real flow. Household providing land, labor, capital, entrepreneurship to businesses, to producer sector, and producer sector providing goods, services to household. This is real flow in the economy. Whereas when we talk about money flow, because इन्होंने सर्विसेज, इन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए थे, उसके बदले में they'll be providing rent, wages, interest and profit in the form of money. They were providing them goods and services. In return, they'll be paying them money. This is known as money flow. So intersectoral flow can be real flow, can be money flow. Money flow is reciprocal to real sector or real flow. Why? It was for land, labor, capital, entrepreneurship. Money has come. जब हाउसहोल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दिया, उसके बदले में क्या आया है? रेंट, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेज, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट. इसी तरह से व्हेन बिजनेसेस प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो का कंपोनेंट, हाउसहोल्ड गिव देम मनी. Household gave them money. So that is why we are saying that money flow is reciprocal to real flow. Thus, money flow from household to the producer is a reciprocal to real flow of goods from producer to household. Likewise, money flow from producer to household. Why is producer giving money to household? Producer is giving money to household. It's a reciprocal of the real flow of factor services, land, labor, capital, and entrepreneurship, which household had provided. उसके बदले में बिजनेसेस हाउसहोल्ड को पैसा दे रहे हैं. तो मनी फ्लो आर ऑपोजिट टू रियल फ्लो एज दे आर इन रिस्पॉन्स टू द रियल. अब थोड़ा सा लेट्स अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस लेट्स अज्यूम दैट देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी. अभी विल ऐड गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑल, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस लेट्स अज्यूम दैट देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, द हाउसहोल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर सेक्टर और द बिजनेस सेक्टर इन एवरी इकोनॉमी. तो यहां पे देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल टू इकोनॉमी सिचुएशन. यू वुड सी दे आर प्रोवाइडिंग लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. इन रिटर्न दे आर गेटिंग वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फैक्टर पेमेंट्स. दे आर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज. इन रिटर्न दे आर गेटिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो अगर आप इनकम का फ्लो देखोगे, दिस इज वन फ्लो, दिस इज अदर फ्लो. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम refers to unending flow of activities of production, income generation, expenditure involving different sectors. तो उसमें फेज ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फेज ऑफ इनकम जनरेशन आएगा, ये सारी चीजें हैं, एंड फेज ऑफ एक्सपेंडिचर आएगा. बट व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दिस. देखो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. Business sector is doing all the production. Business sector is doing all the production, है ना?
अब वो जो प्रोडक्शन किया उससे वॉट एवर दे अर्नड, वॉट एवर वैल्यू दे क्रिएटेड, इट इज गोइंग टू लेबरर्स, इट इज गोइंग टू रेंट, इट इज गोइंग टू इंटरेस्ट, और जो बचेगा वो प्रॉफिट. ऑल ऑफ दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू हाउस होल्ड. तो वॉट एवर वॉज द प्रोडक्शन, उसी का वैल्यू क्या इसके बराबर था, इनकम के बराबर. They produced, they did production, they added some value, and they bought raw material of 100 rupees and they sold it in 200 rupees. 100 rupees इनका क्या हुआ, 100 rupees इनका वैल्यू एडिशन 100 rupees का था, इनका प्रोडक्शन 100 rupees का था. Using this 100 rupees they may pay rent, they may pay their laborers, they may pay interest. Suppose after paying all this they are left with 50 rupees. That is profit of the entrepreneur. तो जितना प्रोडक्शन है उतना ही इनकम है हाउस होल्ड्स का. वॉट एवर इज द प्रोडक्शन अमाउंट, दैट इज द इनकम अमाउंट. एंड लेट्स अज्यूम फॉर नाउ कि देयर इज नो सेविंग हियर. हाउस होल्ड पूरा एक्सपेंडिचर ही कर दे रहा है. दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. In this two sector economy, whatever is the production amount, that is the income and that is the expenditure. And that is why हम बोलते हैं जब हम GDP calculate करेंगे ना, तो we can calculate GDP by production method, we can calculate all the production, or we can calculate all the income, or we can calculate all the expenditure. This is called triple identity. The three types of flows: production, income, and expenditure. Expenditure may be consumption expenditure and expenditure may be investment expenditure, are always equal to each other. This is known as triple identity. Production is equal to income generated is equal to expenditure. इससे ना अभी when you come to different methods of calculating GDP, there this understanding would be important. हम जो expenditure method जो आपने पढ़ा है ना, C plus G plus I plus NX, we will reach there from the production method. We will reach there from the production method. यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, production method से GDP calculation is equal to total income is equal to total expenditure. अब what is the significance of circular flow? One, it helps us in understanding, estimating national income properly, because we cannot calculate production all the time. So sometimes we just look at income, or sometimes we just look at expenditure, and thus it helps us in estimating the GDP. अब देखो, sometimes what may happen, this was my income, this was the income of the household. I may make some consumption expenditure. I may make some consumption expenditure because मैंने goods and services consume करी. But I may save some money. That money may go to bank, and bank say it may go in the form of investment, it may go in the form of loan to businesses. So this saving is mobilized for investment expenditure. This saving is eventually going to investment expenditure. So income is equal to consumption expenditure plus investment expenditure. Saving eventually investment expenditure. When I include business also, government also, it gets a bit complicated, but ज़्यादा difficult नहीं है. ऐसे सोचो, household है, business है. Household is providing what? Land, labor, capital, वो सारी चीजें. But सिर्फ income का flow देखते हैं, तो उसके बदले में मुझे मिलेगा wage, rent, interest and profit. But please understand, अब if I produced things worth 100 rupees, उसमें से some money may go to government also in the form of taxes. That will be government's income. That will be government income. Then some money may go to laborers, some money may go to rent, some money may go for interest, some money may go for profit. That will be another thing. Now, whatever I have produced, उसमें some production may have gone to exporters. मैंने उसे एक्सपोर्ट किया होगा, तो उससे भी मुझे पैसा आ सकता है. तो where am I receiving? तो these are the places where
आई एम स्पेंडिंग मनी। देखो बिजनेस गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, बिजनेस फैक्टर्स ओनर को पैसा दे रहा है, बिजनेस में भी गिविंग सम मनी फॉर इंपोर्ट्स। बिजनेस मेरा बिजनेस इंपोर्ट करना भी हो सकता है ना, आई वे मोबिलाइज रिसोर्सेस एंड देन आई मे इंपोर्ट, तो बिजनेस में भी making payments for import. Business is making payment to government, business is making payment to household, business is making payment for imports. Where is business getting its money from? Business is getting its money from consumption expenditure. Business may get its money from exports. इसने जो export किया उससे पैसा आ रहा है. Business may get its money. Consumption expenditure may also be made by government. Consumption में government भी आ सकता है. Government and NGOs are also included in consumers, so they may be making some consumption expenditure. Household may be making some consumption expenditure. Exporters may be making some expenditure, and that is the money coming to it. ऐसे ही आप household में जाओगे, household is receiving income, then it may have to pay some taxes to government, but household may have provided labor to government also, and thus may be receiving wages from government too, right? Similarly, household may be exporting labor outside the country. Household may be exporting labor outside the country. Household may be getting foreign remittances, है ना? Actually यहाँ पे ना ये रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए था. मैन पावर जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज इट्स अबाउट दिस इज अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इसे करेक्ट करेंगे. व्हेन आई एम एक्सपोर्टिंग मैन पावर, व्हाट वुड हैपन? आई विल रिसीव मनी, है ना? दिस व्हेन आई एम एक्सपोर्टिंग मैन पावर आई शुड बी रिसीविंग मनी बिकॉज इट्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. It is circular flow of income. हाँ, बट मैंने इसमें ये फिर दिखाना नहीं चाहिए था मुझे. हाँ, बिकॉज सॉरी, इसे हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मनी फ्लो. वी आर नॉट टॉकिंग, देखो वी डिड नॉट शो, हमने इसे क्या दिया, लैंड लेबर कैपिटल, वी आर नॉट शोइंग रियल फ्लो हियर, तो इट शुड नॉट हैव बीन शोन हियर. इट शुड नॉट हैव बीन शोन. अगर ये दिखाया जा रहा है तो रेमिटेंस के फॉर्म में पैसे आ रहे हैं, वो आना चाहिए. इट शुड नॉट हैव बीन शोन हियर बिकॉज तो क्योंकि यहाँ पे दिस इज अबाउट मनी फ्लो. दिस देखो, हम ये नहीं बोल रहे ना गवर्नमेंट इन्हें कुछ सर्विसेज दे रही है. हमने क्या बोला? गवर्नमेंट इनका कुछ खरीद रही है, ये टैक्सेस भर रहे हैं. वी आर नॉट शोइंग रियल फ्लो हियर, वी आर शोइंग व्हाट? मनी फ्लो हियर. ठीक है, अब यूपीएससी ये सब नहीं पूछता है, यूपीएससी ये सब नहीं पूछता, बट इवेंचुअली इससे हमारा कंक्लूजन क्या आया? व्हाटएवर इज आवर टोटल प्रोडक्शन, eventually that will be our total income, and that will also be equal to our total expenditure. So when we calculate GDP, we'll be using different methods for calculating GDP, तो वहां पे this would be helpful. Okay, I think this was the last thing. हाँ, चलिए अब ब्रेक ले लेते हैं. आपकी 2 बजे से सीसैट की क्लास है ना, उसे 2:15 करा दे. है सबकी नहीं होगी. Some of you are also enrolled in CSAT, no? When is the class? At what time do we have class? Do we have CSAT class today? At what time do we have it? 2 p.m. Okay. चलिए, let's take a break. Let's take a half an hour का break, है ना? आप लोग लंच कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए. We'll meet again and we'll continue with this session. Okay. Good afternoon, everyone. अब ना थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट खत्म हो गया है. Now some interesting things would start, those areas where we'll see कि direct questions have been there, जैसे incremental capital output ratio या public purchasing power parity wise GDP, या फिर how economic growth occurs. On those issues questions have been asked. कुछ बस areas रह गए कि how what are the different ways of calculating GDP etc. वो सब देख लेते हैं. Otherwise important topics have now come. I'm not saying कि previous 3 hours were not important. Previous 3 hours were important because we'll be using many of those concepts in the coming section. Okay, but first half of the class you may have found it to be a bit boring. Money flow, ये वो ऐसा वैसा. अब वैसा नहीं रहेगा. ठीक है, अब मैंने खाना भी खा लिया तो मेरे में थोड़ी एनर्जी ज्यादा है. आप लोगों ने ब्रेकफास्ट लंच किया है? तुम जानबूझ के नो बोल रहे हो ना, सर ट्रीट देंगे, है ना? पहली क्लास में नहीं मिलती. अभी क्या किया? आधे घंटे चाय पी, सुट्टा नहीं मारा साथ में.
है, बिस्किट भी नहीं लिया, कुछ रस, कुछ भी नहीं, चाय का मजा खराब हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। Now, various methods of calculating GDP, various methods of measuring GDP. देखो, एक तो प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड है, that is production output method. You all the final goods and services that you are producing, measure its output. तो a factory may be there. If we want to understand यार what is its contribution in GDP, we would say that final goods and services जो उसने produce किया है उसका market value क्या है. Let's look at that. Then there is income method. Now sometimes it's difficult to measure the value of goods and services produced. For example, एक ट्यूशन टीचर है, वो बच्चों को ट्यूशन दे रहा है. नाउ व्हाट गुड्स आर यू क्रिएटिंग और व्हाट्स मेजरिंग द वैल्यू ऑफ सर्विस इज डिफिकल्ट. तो व्हाट वी डू इज, यार ट्यूशन टीचर कितने पैसे अर्न कर ले रहा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट ही हैज क्रिएटेड, दैट इज द method in which his contribution in the GDP can be calculated. Or there is expenditure or consumption method. Expenditure or consumption method is like if we are not able to determine the टीचर्स को कितना पे मिल रहा है, वी कैन डिटरमाइन कि कितना फीस बच्चे पे कर रहे हैं. दैट कैन बी वन वे ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस बाय दिस एंटिटी. तो एक जो सिंपल मेथड है, here GDP is total monetary value of all the finished goods and services produced within a country's border in a specified time period. If you want to calculate it sector wise also, you will be able to calculate it simple. दूसरा है इनकम अप्रोच. इनकम अप्रोच में यू विल कैलकुलेट इनकम जनरेटेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट किए हैं उससे कितना इनकम जनरेट हो रहा है. दैट इज अनदर वे इन विच यू कैन मेजर जीडीपी. तो जीडीपी इन दिस मेथड इज प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस वेजेस. प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल, रेंट फॉर लैंड एंड वेजेस फॉर लेबर. देन देयर इज expenditure method. अब expenditure method में ना we eventually come to this formula C plus G plus I plus NX. But how do we come to this? Let us first understand that. इसी में ना the mistakes that many of us were making कि what was the mistake that we were making? Export import GDP में वो सब गड़बड़ कर रहे थे. It was because of this formula that many of us confuse कि exports will have an impact on GDP calculation or import will have an impact on GDP calculation. वो मैंने आपको समझाया how that is blatantly wrong. GDP of this country is this domestic territory is 100 crore rupees. Now it doesn't matter whether it has exported 20 crore and imported 20 crore or imported 30 crore. Those things will not change GDP of the domestic territory. GDP of the domestic territory was goods and services produced within the domestic territory. Right? ये बात समझ में आई? Now देखो, प्रोडक्शन मेथड से भी अंडरस्टैंड व्हाट इज जीडीपी है ना. प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी वाज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री. नाउ जीडीपी इज गुड्स एंड सर्विसेज. अब व्हेन आई एम सेइंग गुड्स एंड सर्विसेज आई मीन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. व्हेन आई से प्रोड्यूस इन द टेरिटरी आई मीन इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी. अब हर बार मैं पूरा टर्म यूज नहीं करूंगा. दैट वाज जीडीपी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ दोस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, where did they go? Who consumed it? Who spent money to it? No, not only household. देखो समझो, some of it may have been consumed by household. अब देखो, we are talking about production that happened here. Production that happened here, है ना? The production that happened in this domestic territory is our GDP. Some goods and some services may have been taken by the household. है ना, उसे लेट्स से वी आर सेइंग कंजम्पशन. अब हाउसहोल्ड देखो, एक हाउसहोल्ड कंज्यूम्स थिंग्स व्हिच आर इंपोर्टेड एज वेल, बट इंपोर्ट वाला इज नॉट आवर कंसर्न. आवर कंसर्न इज द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. तो आई मे हैव बॉट अ कैमरा व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री. आई मे हैव बॉट अ कैमरा व्हिच इज इंपोर्टेड. मेरे को जब जीडीपी कैलकुलेट करना है, आई विल ओनली कंसीडर द camera which I have
which was produced within the domestic territory. So whatever I have produced in the domestic territory, it may be consumed by household. Domestic wala household ka consumption, for foreign wala, imported wala, I'm not including it. All the things which have been produced here either will be consumed by household domestically, or it will be consumed by government. The government may also be consuming some imported goods and services. I'm not including that. जब मुझे जीडीपी कैलकुलेट करना है तो ये प्रोडक्शन देखना है ना. प्लस सम ऑफ इट मे हैव गॉन फॉर इन्वेस्टमेंट. Domestic, like I may have manufactured some machines. So jo domestic investment using that machine happened, and some of it may have been exported. Domestically produced things I may have exported. Domestically produced thing I may have consumed household mein, I may have consumed in the government sector, or it may have gone for investment. Domestically, here I'm saying consumption of domestically produced goods, consumption of by government of domestically produced goods, investment using domestically produced goods and services, plus export. Export तो आप किसका कर पाओगे? जो domestic production किया उसी का कर पाओगे. Is this GDP as per the production method? जो produce किया, whatever you produced in the domestic territory, what happened to it? Some of it may have got exported, or it was consumed by the household, it was consumed by the government, or it was invested by businesses. वो machine आपने produce करी, that machine may have been bought. This TV you produced within the country, a business may have bought it. The household may have bought it, government may have bought it, business may have bought it, or you may have exported. This is GDP in what method? Production method. जो produce किया मैं उसके अभी expect I'm not, this is not C plus G plus I plus NX, that's different. अभी आते हैं उसमें. उसमें export minus import वाला component भी आता है, आएंगे. This is D. Domestically produced चीजों को आपने कितना consume किया? Government ने domestically produced चीजों को कितना consume किया? Investment using domestically produced things. These are domestically produced things used within the country. These are domestically produced things going outside the country. ये मेरा total production है. This is my total production. Whatever I produced in the economy, let's say मेरा production was of 100 crore rupees. 30 here, 30 here, 30 here, 10 here. 30 crore was consumed by consumers domestically. 30 crores worth was consumed by government domestically. 30 crore was invested by businesses. आपने machines बनाए, वो चीज कराई. ये TV आपने manufacture किया GDP में. Where was this TV used? This TV may have been, or let's simplify it. We're only making this TV. We're making 100 TVs. In our economy, only thing that we are producing is TV. We are producing 100 TVs. 10 of them have been taken by households. Sorry, 10 नहीं, 30. 30 of them have been taken by households. 30 have been taken by government. Government अपने offices में लगा रहा होगा. 30 have been taken by businesses like LevelUp. And 10 we have exported. अब समझ में आया पूरा? जो मेरा GDP था वो यहाँ पे हुआ, यूज हुआ. Expenditure of household on domestically produced things. Expenditure of government on domestically produced things. Expenditure of businesses on domestically produced things for investment purpose, and exports. हमने domestic produce का उसे export भी कर सकते हैं. Is this understood to all of you? Now, ऐसे समझो. This is household का expenditure on domestically produced thing. This is not, CD is not household का total expenditure. Let's say household का total expenditure is C. Household का total expenditure is C. But I want only CD in my formula. So CD can be C minus CM. C is the total consumption by household minus consumption of imported things. CM is representing imported things. Imported things wala is not a part of India's GDP.
तो कैन आई राइट सी डी एस सी माइनस सी एम? कैन आई राइट सी डी एस सी माइनस सी एम? पक्का? ऐसे ही कैन आई राइट जी डी एस जी माइनस जी एम? सॉरी, जी माइनस जी एम? कैन आई राइट आई डी एस आई माइनस आई एम प्लस, अब एक्सपोर्ट तो अपना डोमेस्टिक वाला ही करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? नहीं, आपको समझ में नहीं आया? गर्ल इन साई के पीछे जो बैठी है बच्ची, साई अपने पीछे देखो। हाँ, आप सर। हाँ, आई एम आस्किंग यू, डिड यू अंडरस्टैंड? नहीं, यूर लाइक, आपका एक्सप्रेशन ऐसा है तो मेरे को लगा समझ में नहीं आया होगा। क्या नाम है आपका? मनस्वी, मनुश्री, धानुश्री, धानुश्री, भानु, भानु प्रताप, अच्छा ठाकुर भानु प्रताप वाला, ओके, भानुश्री, ओके। तो भानु, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो व्हाई दिस सैड एक्सप्रेशन मेरे फेस को देख के? क्या बोरिंग टीचर? नहीं, चलिए, आर वी गेटिंग दिस? देखो, वी आर गोइंग फ्रॉम प्रोडक्शन मेथड। वी फर्स्ट सेड कि वॉट एवर वी प्रोड्यूस्ड, all that production was consumed like this. Household consumed it, domestic households का domestic consumption, government का domestic consumption, investment जो domestically produced things से हुआ, and export। उसी को मैं लिख रहा हूं, हाउसहोल्ड का टोटल कंजम्पशन माइनस इंपोर्ट वाला कंजम्पशन, बचा क्या? डोमेस्टिक कंजम्पशन। सी माइनस सी एम एस सी डी, जी माइनस जी एम एस जी डी, आई माइनस आई एम एस आई डी प्लस एक्सपोर्ट। अब ना सारे जो इंपोर्टेड चीजें हैं उसे अलग कर लेते हैं। सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस सी एम प्लस जी एम प्लस आई एम। टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस all the imports। इससे we come to GDP is equal to C plus G plus I plus X minus M is imports, क्योंकि I am using for investment तो I'm not using I for imports, and that is why we are able to write GDP as C plus G plus I plus net export या export minus import। This is representing GDP by expenditure method। Household का सारा expenditure, even if the expenditure is being made on imported things। Government का सारा expenditure, consumption, household का consumption expenditure, government का consumption expenditure, सारा investment expenditure, plus export minus all the imports। Imports would have gone where? Import would have been consumed by household, imports would have been consumed by government, or import may have been invested। Import, this is what could have happened with import, but this doesn't mean that import export हमारी GDP को impact कर रहा है। This is a way to calculate it। Why? Because यहाँ पे already why do we have to subtract this M? Because this M is already included here। C is total expenditure, सिर्फ डोमेस्टिक वाले। C is CD plus CM, households consumption in on domestic production, household consumption in imported things जो कहीं और प्रोड्यूस हुआ है, and that is why we have to eventually subtract all that। हम बोल रहे हैं कि जो भाई जो हमने प्रोड्यूस किया डोमेस्टिकली, दैट इज आवर जीडीपी, दैट इज बेसिकली सीडी प्लस जीडी प्लस आईडी प्लस एक्सपोर्ट, वॉट एवर वी हैव प्रोड्यूस्ड
has either been consumed domestically by final consumer, government, or has been invested or has gone for export. ये हमारा जीडीपी है, हमारा जीडीपी ये है। अब उसको मैं टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे लिखना चाहता हूं, तो मैंने कहा यार कंज्यूमर का फाइनल एक्सपेंडिचर दिस, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बिकॉज इन दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देयर आर लॉट्स ऑफ imports also that is not part of our GDP, so we will subtract that. We will subtract that. Does it mean that import और export से हमारा GDP affect हो रहा है? GDP is whatever we have produced in the domestic territory. Got it? Now I think जो student का जो doubt था वो बोल रहे थे कि GDP ऐसे change, देखो if import changes, import increases, if import increases, will it lead to reduction in our GDP? Think of this. अगर import increase हो रहा है तो has this also increased? Because import is already taken into consideration. This has also increased. This has also increased. नहीं समझ में आया? Because C includes CM also. G includes GM also. I includes IM also. आप बोल रहे हो import बढ़ रहा है तो हमारा GDP कम हो जाएगा. As per this formula, this is what it would look. But then this will also reduce, no? We have included IM import here because we have unnecessarily included import here. Because we have included import here. If we were writing GDP as this, then we would not have needed any imports. If we had written GDP like CD plus GD plus ID plus X, we would not have needed any subtraction, any import. Import doesn't have anything to do with our GDP. What is GDP? GDP is production in my domestic territory. Import हो रहा है नहीं हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ता. But as per this formula, it would appear कि as if import is having an impact because we are not able to see what is inside it. Please understand. इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ C plus CM, G plus GM, GD plus GM, ID plus IM. Ab we say, sir, if I increase my M, so my GDP appears to be decreasing. No, it is not decreasing because this and this will also increase. Did you understand? कहां पे गलती कर रहे थे हम? In our understanding of when we calculated GDP by C plus G plus I plus net export, उससे we thought कि export and import are leading to changes in GDP. That was a wrong concept. Export and import is not leading to changes in GDP as such. पक्का सबको समझ में आया? Okay. So by expenditure method, when we want to calculate GDP by expenditure, we are saying private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, investment is what? Capital formation, gross capital formation. अब मेरा consumption expenditure is also on imported things. Government का consumption expenditure is also on imported things. Investment is also of imported investment, and that is why I have to subtract import of goods and services. Okay, so it is commonly represented as GDP as GDP aggregate demand is C plus G plus I plus NX. Got it? Under this method, spending by the different groups that participate in the economy is calculated by अच्छा यहाँ C is basically private final consumption expenditure. This is generally the biggest component of GDP and thus consumer confidence is crucial for economic. Now इसको थोड़ा सा समझते हैं. देखो, when we write GDP like this, or when we write GDP like this, C plus G plus I plus NX, what is the biggest component here? C. Around 60-70% of our
एक्सपेंडिचर मेथड से आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, 60-70% कंपोनेंट इज व्हाट, सी, एंड देयरफॉर कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई डिमांड एंड हाई जीडीपी. अगर कंज्यूमर्स ने कंजम्पशन कम कर दिया, लेट्स से कोविड आ गया एंड एवरीवन इज वरीड कि don't know what's going to happen, some people are losing jobs, usme C will reduce, like will consumers consumption expenditure reduce, GDP will be more negatively impacted than by any other mechanism, because it is the largest. If it reduces by 10%, impact is much larger than if any of these reduce by 10%, because it contributes to more than 50% of our total expenditure and thus total GDP. We're able to get this? Okay. Discrepancies क्या है ना, we say कि total production should be equal to total income, should be equal to total expenditure, but in reality what happens, all the production may not actually be able to generate income, or may not actually be eventually consumed. Some may be getting lost, there may be some other errors, there may be some issues, and thus there will be some discrepancies, है ना. इसीलिए like we have added discrepancy there, there may be small errors, small issues. That's not. If we had ideally gone, then GDP by production method is equal to GDP by income method is equal to GDP by expenditure method. But the world is not ideal. There will be some issues, so that's why the discrepancy wala component. Okay, so this point, remember it carefully. In India's GDP, the biggest component is the private consumption, which is around 60% of the GDP. Government consumption is around 11%, gross capital formation is around 30%, and net export is minus 2%. We import more than export, है ना? So this is the overall now you may say कि sir ये तो minus 2% से, why is this minus? Please understand, we have already included imports here, we have already included imports there, we have already included imports here. Those should not have been included while calculating GDP, because only things which are domestically produced should have been imported, and that is why we have to reduce import from export while we calculate GDP by this method. Okay, clarity है इस पे. Now GDP is equal to C plus D plus I plus net export. Do we clearly understand where it comes from? Now we do not need to remember the formula or the method that was used to reach there, but it's very logical, है ना. We understand production क्या है. Production is जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुआ है, एंड उसको फिर वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होकर वो सीडी में जाए, जीडी में जाए, आईडी में जाए, या एक्सपोर्ट हो जाए, उसी को हमने मॉडिफाई कर करके वी हैव रीच्ड टू दिस फॉर्मूला. नाउ कनेक्टिंग इट विथ इनकम मेथड. इनकम इज कंजम्पशन प्लस सेविंग, है ना. अब देखो, whatever income you got, you either consumed it or you saved it. Consumption में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, और एक्सपोर्ट वाला कंपोनेंट भी हो सकता है. एक्सपोर्ट में भी इट हैज बीन कंज्यूम्ड समवेयर, एंड सेविंग विल गो टू इन्वेस्टमेंट. तो C plus G plus I plus NX. Why three different methods? We have understood that I think we already know it. कि in service sector, it's expenditure method or income method is easier when compared to production method. But when it comes to manufacturing sector, we can determine the price value of this thing कि market में आप इसे किस rate पे बेच रहे हो. But in service sector, income method or expenditure method is a better method, or is a simpler method to understand the overall value. Okay, so I hope we understand the three methods of GDP calculation. We understand कि import export as such is not having an impact there. जो C plus G plus I plus export minus import, that had created a perception कि more import will lead to reduction in GDP. That kind of thing is थोड़ा सा गड़बड़, that understanding. Now let us come to a very important point. When we'll solve PYQs, आज ही PYQs करेंगे हम. We'll see in last 30 years, at least on 3-4 occasions, they've asked questions related to capital output ratio and incremental capital output ratio. इसे सिंपल तरीके से समझते हैं. Yes, हम तीनों मेथड यूज करते हैं. अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग तरीके से जीडीपी कैलकुलेट होता है, फिर सबको ऐड करके हम टोटल जीडीपी बनाते हैं.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हम प्रोडक्शन बेस्ड मेथड पे जाएंगे, सर्विस सेक्टर पे इनकम या एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे, है ना, समझते हैं। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। लेट्स कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो। व्हाट इज कैपिटल? मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं, लेट्स से विद 100 करोड़ रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, उससे मैंने लैंड लिया, उससे मैंने उससे मैंने रेंट पे ली, रेंट पे सारी चीजें ली, दैट दिस वाज माय कैपिटल, 100 crore rupees of capital. Let's say every year the production that I'm doing, the output that I'm doing is 20 crores. I invested 100 crore rupees and production, ऐसे समझो कि मैं क्या बना, ये पेन ही बना रहा था, सिंप्लीफाई करते हैं, ये पेन बनाने की कंपनी डालनी थी मुझे। I came with 100 crore rupees, I bought some machines, I rented a place, I bought some computers, some other training things, 100 crore rupees लगाया मैंने, my capital is 100 crore rupees, and every year this is my capital, and every year my output is 20 crore rupees. Every year my output is 20 crore rupees. Let's say सारे assumptions है, तो what is capital output ratio? Capital output ratio is capital by output, which in this case is 5. In this case is 5. Let's consider this different scenario. There's some other business where my capital is 20 crore rupees and my output is 10 crore rupees. What is the capital output ratio here? 2. As per you, which business is better? Second one. Second, my capital is being used more efficiently when compared to first one. An economy where capital output ratio is high and another economy where capital output ratio is low, which economy would you be more interested in investing? कम capital पे ज्यादा output, कम capital पे ज्यादा output. This is capital output ratio. The capital output ratio, it's a concept used to measure the efficiency of capital utilization in the country. It's also known as capital intensity ratio. The ratio quantifies the amount of capital needed to produce 1 unit of output. Capital divided by output है ना, so for every unit of output, how much capital is needed. It can be used to assess the efficiency of an economy. Low COR means better efficiency in the economy. Low COR indicates that a relatively small amount of capital is required to produce each unit of output, suggesting efficient capital utilization. On the other hand, high COR suggests a significant amount of capital is needed to produce same level of output, indicating capital intensive production or inefficient capital utilization. Did you understand what is capital output ratio? Capital usse output ke. Now, a country may have a current scenario, current capital level and output level. Now, we'll come to incremental capital output ratio sometimes. First, let's note these things. Capital output ratio may vary from industry to industry. In some industry, very low capital would be needed and still output can be large. In some other industry, the capital requirement may be much larger. That industry may be capital intensive. So it may vary from industry to industry. Changes, it may change over time with technology, with changes in the methods of production. Capital output ratio may change. In the past, if I may had started a textile business, machines were not that efficient. So हर एक machine जो output produce कर पा रहा था, that was much lesser. But with changes in technology, machines have become cheaper and they've also become more efficient. So here capital output ratio will be low because in same amount of capital, I'll be able to produce more output. Right? So it may capital output ratio may also change with time, with changing technology, etc. It helps us in making investment decisions. Where would I want to invest? Low capital output ratio wale sector mein. So a low COR shows the additional investment can be productive. A high COR will show the need of other strategies to improve efficiency, and a declining COR
अगर COR डिक्लाइन हो रहा है, गुड थिंग, indicate that economy is becoming more efficient in its use of capital. Clear है capital output ratio? Now we'll come to incremental capital output ratio. देखो, my capital is of 100 crore rupees. Output is of, let's say, 50 crore rupees. Numbers तो कुछ भी हो सकते हैं, different industry में have different scenario. Now this is capital output ratio, जहां पे this capital output ratio is 2. For 1 unit of production you need to have, for 1 rupee of production you need to have 2 rupee of capital. This is the scenario. ये बहुत अच्छा है. This is a good scenario. But for simplification हमने एक basic simple scenario लिया. Now in this industry, if I add 10 crore rupees of capital, how much will output increase? If it was ideally scalable, कि जितनी मशीनें बढ़ जा रही है उतना ही आउटपुट बढ़ जा रहा है, then I would have said it will increase by 5, है ना? But it doesn't work like this in reality. In reality, it doesn't work like this. What happens? एक country है जिसमें एक particular amount of capital है ना? Suppose I talk about, let's say, Norway, Sweden, somewhere. वहां पे roads बने हुए हैं, good quality roads. उसकी वजह से आउटपुट भी आ रहा है. रोड्स की वजह से देयर आर आउटपुट. नाउ क्रिएटिंग सम मोर रोड में नीड नॉट लीड टू proportional amount of output. Why? You may create some more roads, but no one will be using those roads because already roads are sufficient. Are we getting it? Are we understanding it? So in reality, if I invest 10 crore, the output that I may be able to get is only 2 crores. Incremental capital output ratio. आप कैपिटल को थोड़ा बढ़ाओगे तो आउटपुट कितना बढ़ेगा उसका रेशियो. कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द करंट सिनेरियो. Currently, what is your capital? What is your output? Incremental capital output ratio is if you slightly increase your capital. What will be that slight increase in your output? If you increase your capital by 10%, will your output increase by 10%? Or will it increase by less than 10%? Will it increase by more than 10%? It may be different. This is incremental. This measurement will be incremental capital output ratio. जहां पे incremental capital output ratio low है, good. With very less capital investment, you'll be able to produce more output. Incremental capital output ratio is low. So in this kind of scenario, what will I try to do? Invest capital. Say if you go to a poor country, let's say we go to some African country, India में चले. There are several states जहां पे अभी भी अगर आप थोड़ा capital investment कर दो, their output will increase drastically. Situation will improve drastically. जैसे when Nitish Kumar had come to power in Bihar for the first time, Bihar government had faced a lot of challenges before that. But when Nitish Kumar had come to power way back in 2004-5, मुझे date exactly याद नहीं है. But उस period में ऐसा था, just after he came to power, he ensured थोड़ा corruption कम हो, he ensured थोड़ा law and order situation अच्छा हो, he ensured good quality roads getting created. Capital improve हुआ, output had increased drastically. 2008-9 में Bihar's GDP growth rate was second highest in the country. GDP नहीं, GDP growth rate, because वहां पे capital का situation इतना खराब था. Addition of some capital led to a lot of output. That may not be the case with Maharashtra. That may not be the case with Tamil Nadu. उतना ही capital output add करके आपका GDP, आपका state GDP output may not increase that fast. तो incremental capital output ratio may vary. But if it's low, it means
invest capital, your output would increase much faster. If it's high, means even after investing capital, not a lot of things would happen. Like go to Norway, जहां पे roads की जरूरत है, already roads है, फिर भी उन्होंने जाके कहीं पे बीच में एक रोड बना दिया. Their output may not increase at all. Capital addition will not lead to any output increase. But if you go to an underdeveloped region, वहां पे add capital and you will be seeing output increase happening. So with incremental capital, how much incremental output is there? Okay, now this is known as ICOR, incremental capital output ratio. Like आप कितना capital add करो for delta output, or let's say you want to increase your output by 8%. You want to increase your GDP by 8%. So delta output is basically 8%. So you say you can calculate, if you know ICOR of your economy, then you can calculate how much capital is needed. How much capital is needed is equal to ICOR plus into how much output change you want. If you want your GDP to grow by 8%, so incremental capital output ratio into 8% will tell you how much capital investment is needed. Incremental capital output ratio into 8%, that is the output increase that you want. That will tell you how much capital is needed. If ICOR is low, in very low capital you will be able to grow at 8%. If ICOR is high, you will need much higher capital investment for further growth. Low ICOR is a good situation, right? It is similar to capital output ratio, but here we are talking about incremental change in both the sections. मोहित, हो गया पक्का? सबको समझ में आया ये? Okay. ICOR means the additional amount of capital required to produce one additional product. ICOR is equal to incremental capital divided by incremental output. It helps to assess how much additional capital is needed to generate an additional unit of economic output, typically GDP or gross domestic product. It quantifies the amount of capital required for an increase in economic output. Capital investment कितना चाहिए? ICOR into growth rate that you want, into the output that you want to increase. अभी हम PYQs करेंगे. You will see regularly बहुत सारे questions, at least 3-4 questions इस पे UPSC ने पूछे हैं. हम पढ़ते टाइम ना बहुत ध्यान नहीं देते हैं, but this is a very very important concept. Lower ICOR indicates that the economy can produce more output with less additional capital, suggesting that the capital allocation is more efficient. High ICOR implies that significant amount of capital is needed to achieve the same level of economic growth, indicating the capital investment may be less efficient. This helps us to understand the amount of capital required to achieve a particular growth rate. Comfortable है सब लोग इस पे? Everyone, each one of us is clear about what is capital output ratio and what is incremental capital output ratio? Will we comfortably be able to answer questions related to this? You will see questions are very easy. Once you understand the fundamentals, questions are very easy. And when we are not able to understand the fundamentals, हमें लगता है पता नहीं ये क्या complicate करके पूछा हुआ है. Okay, now let's go to we are talking about GDP measurement only. So let's go to let's understand what is real GDP and what is nominal GDP. And to understand this, यहाँ पे ना एक टेबल दिया हुआ है, and let's work using that table, using this table. आप लोगों को गर्मी लग रही है? नहीं लग रही? मुझे लग रही है. ऐसी चलवा लो? नहीं फिर गेट बंद करना पड़ेगा, छोड़ो. Let's understand GDP. What is GDP? GDP is the market value of final goods and services. Market value of final goods and services. अब देखो, let's calculate GDP. 2012-13 में, and let's consider an economy where only wheat is produced, and this is the market value of wheat. So what is the GDP?
10 kg of wheat, rupees 10 per kg is the market value. What is the GDP here? Rupees 100? Rupees 100? Right. 2013-14 में, let's say, wheat, this economy produced wheat of 12 kgs. And the market price of wheat was, in that year, it was 15 rupees per kg. So we produced rupees 180 ka wheat. Right. 2014-15 में, we produced rupees 225 ka wheat. 2015-16 में, we produced rupees 324 ka wheat. And finally, we produced rupees 400 ka wheat. Right? So when someone asks what is India's GDP today, and when we say that it is $3.6 trillion, we basically say that in our domestic territory, whatever was produced, its market price, in our domestic territory, whatever was produced, its current market price, से आप उसे multiply करोगे, this is the money value that you get. This is GDP. Our fictional economy is only producing wheat, uska GDP ये रहा. But now, if we calculate the growth here, we'll see growth of 80%. Rupees 100 से rupees 180 आ गया ना? GDP growth of 80%. क्या our GDP growth rate is 80%. Isn't it? Am I right? GDP growth is 80%. This may give us a wrong picture. Actually, output has not increased by 80%. It's because of inflation. It's because of inflation that overall output looks to be much higher. It's because of inflation that, तो इसको let's say हम इसको growth rate calculate करते हैं. Growth rate calculate करने के लिए यहाँ तो because we do not have previous year's data, तो यहाँ पे will not calculate it. But if we go here, our growth rate is 180 minus 100 over 100 into 100. Increase over the base into 100 percentage में calculate करोगे तो this will come out to be 80%. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 over 180 into 100, 25%. है ना? ऐसे ही नीचे के नंबर्स आ सकते हैं. मैं इतना मैथमेटिक्स में मेंटल मैथमेटिक्स भूल गया हूं. In childhood we had a book on mental mathematics, no? Did you know? Till class 5-6 there used to be a mental maths का book. नहीं? अच्छा, Vedic maths. Okay. No, we used to have in my childhood there was a mathematics का book and then there was mental maths का book where teacher used to say you will not use copy pen. You will not use copy pen. You will use your brain to do this calculation. That was an effort to increase your mental calculations mechanism rather than you needing copy pen for everything. Okay, but वो आप calculate करोगे आपको मिल जाएगा. अभी उसमें नहीं जाते हैं. Now, but this method of calculating the GDP may give us a inflated picture कि our GDP has increased by 80%. And it's because of the increase in price. So here a suggestion that is given is here, why don't you consider price to be same? एक base year का price ले लो, base year का market price ले लो. If you are calculating GDP at market price, आप base year का market price ले लो. और उस base year के price के basis पे you calculate GDP. तो let's say we take base year to be 2011. ये क्या हो रहा है? अरे, how do I revert it? यहाँ पे रिवर्स करने का ऑप्शन भी नहीं है. कोई बात नहीं. Let's come back. Here it was 180. Here it was 225. Here it was 80%. 25. 80% here. Here it was 80%. Here it was 25%. We understand? Now,
if we take 2011-12 to be our base year and we say कि यार we'll use price of this year, inflation की वजह से GDP increase should not be considered, let's use the market price of this year and based on that calculate GDP. So let's say wheat ka price this year was ₹10 per kg and we'll use this price of wheat, this market price of wheat for calculating GDP. In that case, in 2012-13, how much is our? अच्छा यहाँ पे भी तो था 100. GDP is 100. In 2013-14, 12 rupees into base year का price 120. In 2014-15, 15 rupees and base year का price. Oh, sorry, 15 kg and base year का price 150 rupees. In 2015-16, 18 kgs of wheat, but price कौन सा हम यूज कर रहे हैं? Base year का 180 and then 200. So for calculating GDP growth, this real GDP numbers may be giving us a better picture. Why? Because here we are not increasing the size of GDP because of increase in prices. यहाँ पे अगर आप growth rate measure करोगे, here you will find growth rate to be 20%. Here growth rate may be 30 over 120. Here it will be 25. Still. Here it will be 20%. Here it will be around 11%. 20 over 180 होगा ना? 20 over 180 into 100 ना, थोड़ा सा 11% के आसपास होगा. तो यहाँ पे देखो, the growth rate was coming to be 18%, 80%. This has come to 20. Reality में production कितना increase हुआ है? If you want to see how much production has increased, without worrying कि price कितना बढ़ गया है, you will go there by real GDP mechanism. So when we calculate GDP using the current prices, it is known as nominal GDP. When we calculate GDP using a constant price of a base year, it is known as real GDP. Real GDP gives us a better picture of how much production has increased, because here our GDP is not changing because of increase in prices. यहाँ पे देखो, when it says 20%, तो आपका production 10 kg से 12 kg हुआ है. Here when it says 25%, आपका production 12 kg से 15 kg, it's an increase of 25%. तो real GDP gives you a situation where you are able to see the increase in production, whereas nominal GDP में price increase has also been considered, and when it has been considered, overall increase looks to be much bigger. Overall increase is much higher because here you are using every year's price. अब even if GDP had not increased, only price had increased. Let's say मैं ये situation लेता हूँ. A country is producing 10 kg of wheat in a year. 2012-13 में it is producing 10 kg of wheat at price price, हर साल का प्राइस ऐसे लिख देते हैं. इसका प्राइस था 10 rupees per kg. In 2012-13, this is the what? Production. This is the price. What is the GDP? 100 rupees. GDP is, nominal GDP is 100 rupees, right? Next year, 2013-14 में, let's say we were only able to produce 5 kg of wheat. GDP में decline आया है, but because of shortage, the price of wheat is ₹30 per kg. What will nominal GDP be? Nominal GDP will show an increase in output, increase in GDP. But in reality, has the GDP increased? It's because nominal GDP take current year's price, current market price, and that current market price may have increased, because of which our total GDP looks increased. Whereas if we were using base year's price, let's say base year में price was ₹5 per kg.
तो 2012-13 का रियल जीडीपी क्या हो जाता? What would have been the real GDP of 2012-13? 10 rupees into 5 rupees 50. 2013-14 का रियल जीडीपी क्या हो जाता? 5 into 5 25. Is there a decline? It would have seen a decline of 50%. And real GDP, जब आप growth rate, when you are calculating growth rate using real GDP, you are able to get the right picture of increase or decrease in production. Rate of increase, rate of decrease, you're able to better measure using real GDP mechanism. But when you use nominal GDP, so it doesn't give you correct picture. Nominal GDP can be good for telling you what is the size of your economy today. But nominal GDP is not the right way of telling that your economic growth कितना है. Economic growth के लिए real GDP के mechanism से when you go for economic growth rate calculation, that gives you a better picture. We can understand it by this example. Okay, तो real GDP, nominal GDP वाली बात समझ में आई है? Let's एक बार go through the notes and understand it. So GDP, we can calculate it either on nominal basis or on real basis. In case of nominal GDP, all goods and services are valued at prices that are actually sold in that year, current prices. Whereas real GDP is an inflation adjusted measure that reflects the quantity of goods and services produced by an economy in a given year with prices held constant from year to year. So real GDP is reflecting the quantity of goods, because price आप क्या कर रहे हो? Price आप constant रख रहे हो base year का price में, in order to separate out impact of inflation or deflation from the trend in the output. Here, while calculation the value of total output produced, the price of a base year is used. This allow for adjustment of inflation's impact. We have through this understood how inflation can have very inflationary impact on GDP. और inflation अगर price कम हो गया, तो even our output is going up, it may show that economy is in a decline, and that's not right. That's not the correct picture. Okay, so nominal GDP has taken into consideration current prices. Real GDP is the current production but price of base year. Nominal GDP is current production and current year's price. अब इन दोनों में डिफरेंस होगा. This is giving you real GDP, this is giving you nominal GDP. That difference is measured through what is known as GDP price deflator. Real GDP is calculated by using GDP price deflator. That is, आप क्या करो, आपके पास nominal GDP है, nominal GDP को you will, when you divide it by GDP price deflator, you get real GDP. और इसे ऐसे समझो, nominal GDP divided by real GDP is equal to GDP deflator और GDP price deflator. तो जैसे हम पढ़ेंगे CPI, WPI, those are indices. CPI inflation, WPI inflation, those are indexes to or indices to measure price increase, to measure inflation. But CPI will measure only consumer level पे inflation. WPI will measure only manufacturing वाला wholesale level पे. It will not take into consideration. WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना. सीपीआई में सिर्फ कंज्यूमर कंसीडर कर रहे हो, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से कुछ कंसीडर नहीं कर रहे हो. बट जीडीपी डिफ्लेटर इज काइंड ऑफ मेजरिंग प्राइस चेंजेस with respect to entire economy. GDP deflator is in this way a measure of price rise in the entire economy. Or if you know GDP deflator, you can say real GDP is equal to nominal GDP over deflator or GDP deflator. इसके बारे में we will study more
when we come to the chapter of inflation. When we'll come to chapter of inflation, आपका second booklet, the booklet tomorrow will be on inflation. This chapter of inflation will have concept of CPI, concept of WPI, concept of some producer level पे inflation. वहां पे हम तीनों का comparison करेंगे कि GDP deflator, how is it different from CPI inflation, how is it different from WPI inflation. But अभी briefly समझ में आ जाएगा. CPI में consumer price index में we are considering prices of those things which consumers are consuming. Wholesale price index में देखो wholesale level पे can capital goods be also be there. So it is considering both capital goods and consumer goods, but it is not considering services. Whereas consumer price index में हमने services को भी consider किया. When it comes to deflator, GDP deflator, has it taken into consideration everything? Capital goods, consumer goods, goods, services. This will be the core difference. But GDP deflator in this way, like GDP deflator is what? Nominal GDP over real GDP. अब GDP deflator ना calculate करना is a challenge. And in different sectors, different mechanisms are used. उन complications में अभी जाते नहीं हैं. Okay. Nominal GDP is generally higher than real GDP. Why nominal GDP is generally higher than real GDP? Because inflation generally positive ही रहता है. Now, in 2015, we made some changes, some major changes in our GDP calculation method. एक इस पे 2020 या 21 में मेंस में एक क्वेश्चन आया था. I had never taught it in mains. I was always teaching it in preliminary examinations. मैं कभी इसे मेंस में नहीं पढ़ाता था क्योंकि मेंस में मैंने 2016-17 में कभी पढ़ाया था इसे because the changes had occurred then only. But after that I was always teaching it in preliminary examination. And कई बार क्या होता है ना, जैसे when you are studying for preliminary examination, you study lots of things जो आप मेंस में यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एस्टेरॉइड्स. अब मेंस में मैं जाके एस्टेरॉइड और वो चीजें नहीं पढ़ा था, बट प्रीलिम्स में आई हैड स्पेंट एटलीस्ट 30 to 45 minutes in explaining asteroids, near earth asteroid, various missions, जैसे डार्ट मिशन के बारे में. तो मुझे बच्चों ने ये बोला कि सर उस टाइम इतने अच्छे से पढ़ा था, इतने अच्छे से रिवाइज किया था, इवन एट द टाइम ऑफ मेंस we didn't cover it, we were able to write good answers on it. कई बार इंटरनेशनल बॉडीज पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब इंटरनेशनल बॉडीज जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो वी स्टडी इट इन अ लॉट ऑफ डिटेल. इंटरनेशनल बॉडीज में ही आपको पढ़ाऊंगा. वी विल स्टडी इट इन अ लॉट ऑफ डिटेल. मेंस के टाइम वी डू नॉट स्टडी लाइक 200 इंटरनेशनल बॉडीज. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फीजिबल. मेंस के टाइम हम बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं. यूएनएससी के बारे में पढ़ लेंगे, WTO IMF के बारे में पढ़ेंगे. We'll study perhaps about UNICEF, जो न्यूज में कुछ चीजें चल रही होंगी, but we'll not study about कि यार वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से एग्रीमेंट है. ये सब हम प्री में पढ़ते हैं. एंड समटाइम्स these things become useful for mains because at the time of mains you had not covered it because it was not that important. But UPSC कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती है जो important नहीं है. So this was one such question. I had always been teaching it in mains examination. Oh sorry, in preliminary examination. But it came in mains examination too. तो अभी recently ना कुछ factual चीजें पूछने की उनको आदत हो गई है. In every paper they ask you something very factual, and that is why we should be, if we want to do well for mains examination too, it's very important कि हम बहुत carefully ये सारी चीजें पढ़ें, ये सारी चीजें समझें. Okay, let's come to this topic. What were the changes which were made in 2015? What were the changes which were made in 2015? Now, before that, अच्छा अभी ब्रेक हुआ था ना, तो there were some students who came to me for doubts और मैंने भगा दिया था. प्लीज अभी डाउट्स पूछ लीजिए जो थे. I'm sorry, वो क्या होता है ना, 3 घंटे बोलने के बाद ना I also need थोड़ा सा रेस्ट. आपको लगता है कि बस 30 सेकंड्स का 1 मिनट का ही तो डाउट है, बट 30 सेकंड्स 1 मिनट आपका, 30 सेकंड 1 मिनट दूसरे का, 30 सेकंड 1 मिनट तीसरे का, ऐसे ना फिर मेरा ब्रेक भी नहीं हो पाता है. अभी आई हैड टू हैड माय ब्रेकफास्ट लंच, वो भी नहीं हो पाता, और फिर मैं ऐसे थका हारा सा आपके पास आ जाता और फिर मैं अच्छे से डिलीवर भी नहीं कर पाता. इसीलिए जो ब्रेक वाला पीरियड होता है ना, अज्यूम कि वो मेरा भी ब्रेक है ना. मैं आपको क्लास के बाद, अभी क्लास के बाद यू आस्क एज मेनी डाउट्स, नो प्रॉब्लम. पहला अभी पूछ लीजिए. तो आपके डाउट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बाकी लोगों को भी समझ में नहीं आए हो. तो 2-3 स्टूडेंट्स हैड कम टू मी फॉर डाउट्स और मैंने मना कर दिया था उस टाइम. अभी जो पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए. नहीं, अभी यू आर हेजिटेंट. रिजॉल्व हो गया, ऐसे घबराते हो क्या? चलो कोई बात नहीं, क्लास के बाद पूछ लेना. नाउ
there are some online doubts, like Vanilla is saying, sir, it happens FOMOing when you are in online batch. FOMOing, fear of missing out. नहीं बेटा, देखो, generally I would prefer students coming in offline batch because here they are disciplined. Online में ना आप ये वीडियो करने बैठोगे, after 1 hour you will take a break. You will start watching some YouTube video, you will start watching some shorts, या मम्मी बुला लेगी, कुछ हो जाएगा, दोस्त आ जाएगा. Class में you will finish these classes in the time frame. Class में when I'll do PYQs, I'll ask each one of you to answer it. आप कोशिश करोगे, practice करोगे. Class में sometimes you will not be able to understand something, you will feel frustrated, irritated, but you will still keep sitting in the classroom. But online जब पढ़ रहे हो, अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं हम, मेरे को समझ, you do this kind of things, है ना? तो coming offline is good, but online has its own advantages. अगर आप disciplined हो, तो देखो, because more than 90% of the students are not disciplined, that is why in general what do I recommend? Offline करो. But if you're really disciplined, if you're really sincere, online could be a better thing because you do not have to unnecessarily travel. जैसे जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे लास्ट ईयर पढ़े हुए हैं, उनको मैं बोलता हूं ऑनलाइन करो और 1.25 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे या 2 की स्पीड पे देख लो, क्योंकि यू वुड नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स. अभी तक जो मैंने पढ़ाया है सब मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया था. अभी करंट अपडेट्स में तो आना बाकी है, जीडीपी में क्या चेंजेस हुए हैं, सेविंग रेट में क्या सिचुएशन है, उस पर आना बाकी है. तो दिस यू कुड हैव वॉच्ड इन 1.5 और 2 का स्पीड ऑल्सो. तो टू दो स्टूडेंट्स आई रिकमेंड कि आप ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए. बट इन जनरल इफ यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सिंसियरली पढ़ना चाहते हो, come offline, that would be a better option. Okay. Otherwise, there is no difference. I'll be available for doubts for online students also. I'll be available for doubts of offline students also. In fact, देखो अगर ये वीडियो YouTube पे डालने वाले हो तो मेरा नंबर डिलीट कर देना वहां से. I'll give you my number, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करिएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है. अगर दैट डाउट विल बी वैसा वाला जो सिर्फ आपको बताना है तो मैं ऑडियो में उसी टाइम बता दूंगा. इफ दैट डाउट इज समथिंग व्हिच आई थिंक द एंटायर ग्रुप नीड्स टू नो, आई विल पुट दैट क्वेश्चन ऑन द ग्रुप और फिर मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, सो दैट हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी बन रहा है ना, तो उसमें आप सब लोग ऐड हो रहे हैं, तो आई विल ऐड यू, आई विल रिप्लाई यू देयर. तो दिस इज माय नंबर. Okay, now let's go to 2015 में जीडीपी कैलकुलेशन में, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स में क्या क्या चेंजेस हुए. Gaurav is saying, sir, it feels little ununderstandable in 1.5x. It is because you are beginning to study with me. Once you are used to this accent, the way I pronounce various words, even 1.5x will be comfortable. Even 1.5x will be okay for those students who have already studied with me in the past. जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको क्लास में आके ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए. मेरा रिकमेंडेशन ये है, या ऑनलाइन भी नॉर्मल स्पीड पे देखना चाहिए, नॉट एट 1.5. लेट्स कम टू 2015. 2015 में GDP calculation method में some major changes were brought. What were those changes? देखो, first major change that happened was before 2015 we used to calculate GDP at factor cost. Now we have moved to GDP at market price. Let's understand what is GDP at factor cost and what is GDP at market price. देखो ये पेन बनाया है हमने. Let's say this is the pen. We manufactured this pen. Now when I have to calculate its contribution in the GDP, at factor cost, I will calculate to manufacture this pen, how much rent, how much interest, how much wage, and how much profit. Factors of production में कितना खर्चा हुआ है, how much money was spent in its factors of production. That is factor cost of this pen. तो पहले when you used to calculate GDP, we used to calculate GDP at factor cost. But even after factor cost, what comes taxes. गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही होगी, वो तो फैक्टर कॉस्ट नहीं है ना, उसके बियॉन्ड है. तो दिस फैक्ट्री may have produced this pen in 12 rupees, but then government says कि मीठे वाले पेन पे 12%,
खट्टे वाले पेन पे नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ थोड़ा नमकीन वाले पे कुछ और रेट, इस तरह गवर्नमेंट रूल्स लेके आएंगी, taxes, then government may give some subsidy also. Oh, this is for educational purpose. It may also lead to reduction in prices, है ना? It may lead to reduction in prices. तो मार्केट में अरे फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इस प्राइस पे पेन मिल रहा है. बट वी डिड नॉट यूज टू कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस. व्हाट डिड वी यूज टू डू? GDP at factor cost. And even now some of you tend to use old books, old NCRTs etc. उसमें ये दिया हुआ है कि GDP is calculated at factor cost. But now, so after 2015 we have moved to GDP calculation at market price. Got it? पहली चीज. Then not only this, we have also started using GVA method of GDP calculation. That is, अब even today in this booklet when you will see GDP numbers, you will see we are talking about GDP and we are also talking about GVA. GDP growth rate, GVA growth rate. GDP growth rate में we'll talk about real GDP growth rate, nominal GDP growth rate. ऐसे ही real GVA, nominal GVA. तो एक concept है GVA भी. We have started using GVA method of GDP. The first change that we did is what? From factor cost method, we have moved to market price method. Now we calculate GDP at market price. Then how do we calculate GDP at market price? We use GVA method of GDP calculation. What is GVA method of GDP calculation? इसे ऐसे समझो. देखो, सबसे पहले you will see we have एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोचते हैं. एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, it took some raw material. अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों का CSAT का क्लास है? How many? Please raise your hand. Some of you have CSAT classes. Online also. How many students have CSAT classes, guys? है? तो I think you will need some break CSAT क्लास से पहले, है ना? ओमी सर, CSAT क्लास 2:15 पे हो सकता है क्या? ऑनलाइन ज्यादा बच्चों का है. अच्छा, ऑनलाइन एडमिशंस भी ज्यादा है. राइट. अजय, एक बार ओमी सर से पूछ लो क्या क्लास 2:10 2:15 पे हो सकता है, तो मैं थोड़ी देर और पढ़ा दूंगा. एक बार पूछ लो, अगर क्लास 2:10 या 2:15 पे हो सकता है तो I'll be able to teach for 7-8 more minutes. हाँ, let's come here. Let's say this is this factory. We want to calculate its contribution in GDP, है ना? तो अब it is buying raw steel at 100 rupees. It is adding पैसे किसे देगा ये? रेंट, इंटरेस्ट, वेज एंड प्रॉफिट, इस सब मिला के 50 रुपीज है. तो इट हैज एडेड अ वैल्यू ऑफ 50 rupees. It has added a value of 50 rupees and it will be selling it in 150 rupees. तो output minus input is the value addition. Output minus input is the value addition. तो इनका value addition कितना होगा? 50, है ना? और जैसे let's say this is the final product. We calculate GDP by only calculating the monetary value of final products. तो we will not include this. तो ओवरऑल जीडीपी में इस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन 150 रुपीज है, बट इस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 50 rupees. And what is the total value that has been added on this product? What 50 rupees has been added by this? There has been addition by नहीं हो पाएगा. देख रहे हो? चले we'll continue with the GDP calculation method tomorrow.